सभापति जी। The offshore areas mineral development and regulation amendment bill 2023. Please resume your seats. Please resume your seats. Yes, Mr. Pramod Tiwari. Sir, what is your point of order? Sir, I have 3-4 point of order. At least listen one. 3 or 4? 3 or 4 point of order. Listen one, sir. And then you decide what rule should be. Sir, हम लोग विनम्रता पूर्वक भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि मणिपुर में जो संहार हुआ है, जिस तरह महिलाओं की मान्यवर, अगर आप वो नहीं सुनेंगे, मान्यवर आप सर, मान्य सदस्यगण, मैंने मान्य सदस्य, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, मान्य सदस्यगण, मैंने मेरे प्रयास में शायद कुछ कमी रख दी है। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। इतना प्रयास किया है, इतना चिंतन किया है, इतनी मुलाकात की है, चैम्बर में सदस्यों से बात की है, पर हालात ऐसे बन गए कि वी आर आउट टू विन ब्राउनी पॉइंट्स। हाउस में डिस्कशन लिस्ट करने के बावजूद नहीं हो पाया है। मैंने यहां तक कह दिया, नो, इट्स अ गुड पॉइंट, बट इफ आई स्टार्ट डीलिंग विद योर इग्नोरेंस, आई विल हैव नथिंग एल्स टू डू। आई विल ओनली विल बी क्लियरिंग द एयर। श्री प्रहलाद जोशी, to move a motion for consideration of the offshore areas, Sir, with your kind mineral permission, development and regulation amendment bill 2023. The Offshore Mineral Development Regulation Act 2002 as passed by Lok Sabha be taken into consideration, sir. Motion moved. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Dr. Sasmit Patra. Sir, I stand to support the Offshore Areas Development and Regulation Amendment Bill on behalf of my party, the Biju Janata Dal, and our leader, Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji. We support the bill. Sir, the Geological Survey of India estimates 79 million tons of heavy minerals that are there, and GSI has been able to delineate that such preliminary resources for heavy minerals are present in the inner shelf and mid-shelf regions of Odisha, Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu and Maharashtra. The amendment bill seeks to provide transparency in the allocation of minerals from the country's offshore basins, with a provision for granting production leases only through auction and keeping a reservation for government entities and PSUs. This is the first time that the nation is opening up to provide vast mineral resources on offshore areas for the country's development and the country's growth. Having said that, sir, I'll quickly dwell on the features of the bill, sir. Firstly, the bill introduces a composite license for granting rights for exploration as well as production, which is very critical in taking these resources forward. It is also providing for maximum area for undertaking exploration in the single composite license, which will be 30 minutes latitude by 30 minutes longitude. So it provides a specific area for exploration as well. The validity of the concessions have also been provided for. Apart from that, in order to ensure transparency, auctions have been made mandatory for certain specific concessions. Apart from that, in mining in the reserved areas, the bill allows for administering authority to grant a composite license or production lease to the government or government-related companies. Joint ventures of government companies would also be eligible to participate in these measures. It shows that there is an intent to ensure a broad basing of such activities.
Apart from that, sir, the bill reduces this to 1 minute by 1 minute latitude for the standard areas of blocks and provides for greater penalties as fines instead of 50,000 earlier. Now the bill has provisions that if there are violations, the fine has been increased to between 5 lakhs to 10 lakhs. It shows the intent of the government to ensure that there is strictness and there is efficiency in this regard to ensuring nothing wrong happens. Some additional changes have also been added in the bill. Regarding mining of atomic minerals, sir, a very critical aspect has been done by the Honorable Minister, is that in case of atomic minerals, the exploration, production and composite licenses would only be granted to government or government companies. So since we are starting out in this process of offshore mineral mining, it provides for greater support to ensure that we start with the government in the atomic mineral sector only. And secondly, it's a very good thing that an offshore areas mineral trust has been formed, which will provide a certain amount, and all these concession holders will provide a fund which will ensure that such provisions and such measures would lead to ensuring exploration in offshore areas. And this offshore areas mineral trust will also lead to research and studies about mitigation efforts of adverse effects of offshore mining on the ecology and also relief when there is an occurrence of a disaster. Sir, there is one specific area. I come from the state of Odisha. And as you know, sir, Odisha is a mines and mineral-rich state. Yesterday, we were discussing and we supported the Mines and Minerals Amendment Bill. Today, on this bill, sir, I'd like to say that Odisha, out of the total composite whole of India, 83% of chromite of the country is in Odisha, 92% of nickel is in Odisha of the country, 55% of bauxite, 38% of iron ore, and 26% of coal. So the state of Odisha and the vast coastline of 480 kilometers would imminently benefit from this kind of a measure to open up this sector so that we can have greater private participation and ensure that through this greater private participation, we're able to broad base and ensure that not a single gram of offshore minerals so far has been lifted since this bill came in the year 2002. Can you imagine, sir? It was as an offshore minerals in 2002. We're standing in 2023. In 21 years, despite this bill being in force, not a single gram of mineral we have been able to harvest. So therefore, this bill is extremely crucial. And especially today, after 75 years of Indian independence, when we are trying to become a $5 trillion economy, we want to become the third largest economy, we have to ride on the capacity. Our import duties, our import costs will reduce. The kind of pressures we face in terms of getting these minerals from other countries will reduce. At the same point of time, as we go towards a net carbon zero economy, these kind of measures to harvest it from the offshore areas of our country, which is a vast area, whether you look at the Arabian Sea or the Bay of Bengal, it will lead to India becoming more resilient, becoming more robust, becoming more self-reliant, and becoming not only the third largest, but in years to come, becoming the largest economy in the world. This bill will be helpful. And with this, Biju Janata Dal and our Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji support us with the bill. We support the bill. Thank you. Dr. Anil Sukhdev Rao Bonde. धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं माननीय मंत्री जी ने प्रहलाद जी जोशी इन्होंने लाए हुए ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। सभापति महोदय, भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन किया था और उस समुद्र मंथन से 14 रत्न, जिसमें से लक्ष्मी भी प्राप्त हुई थी, अमृत भी प्राप्त हुआ था, विष जो प्राप्त हुआ था जो नीलकंठ ने पिया था, कामधेनु भी प्राप्त हुई थी, कल्प वृक्ष भी प्राप्त हुआ था। लेकिन अमृत मंथन के बाद में आज भारत के अमृत काल में पुनश्च अमृत मंथन करके पूरा पुनश्च समुद्र मंथन करके यह समुद्र से जो मिनरल्स है उसका एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन करने का ये बिल के माध्यम से सुनिश्चित हो गया है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इनका इस अमृत काल में जो एक नया कॉरिडोर ओपन किया है उसके लिए उनका मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं। और एक ब्लू इकोनॉमी जो उन्होंने खोली है,
जो आज तक 70 साल तक ये ब्लू इकोनॉमी हमें पता भी नहीं थी। अभी आदरणीय संबित जी पात्रा बता रहे थे कि अभी तक सस्मित जी पात्रा बता रहे थे कि अभी तक मिनरल्स वहां से एक्सट्रैक्ट नहीं किए गए, और आज इस बिल के माध्यम से यह शक्य होने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बिल में मैं देखता हूं तो इसमें एक जो ट्रस्ट बनाया गया है, ऑफशोर एरियाज मिनरल ट्रस्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि हम देखते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट होता है, और हर डिस्ट्रिक्ट में जहां से भी खनिकर्म होता है उसका पैसा डेवलपमेंट के लिए वही एरिया में जहां से खनिकर्म हो रहा, जो लोगों को तकलीफ हो रही, जो लोगों के ऊपर एनवायरमेंटल इंपैक्ट हो रहे, उनके लिए खर्चा किया जाता है। वैसे ही परसों ही नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट यह भी निर्माण किया गया, यानी राष्ट्रीय लेवल पे भी ट्रस्ट निर्माण किया गया। वैसा ही ऑफशोर एरियाज मिनरल ट्रस्ट ये बिल में निर्माण किया गया, और इसमें रॉयल्टी के अलावा वो प्रोडक्शन करने वाले, एक्सप्लोरेशन करने वाले लाइसेंसी जो रहेंगे उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और इसका फायदा यह होगा कि यह ट्रस्ट के माध्यम से जो काम किए जाने वाले वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विशेषतः जो लोग इससे अफेक्ट हो सकते हैं वो लोगों को अफेक्ट होने के भलाई के लिए उनके लिए यह काम किया जाएगा। दूसरी बात, ऑफशोर एरिया का एक्सप्लोरेशन करने के लिए रिसर्च और स्टडीज करना पड़ता है, उसके लिए भी इस पैसे का उपयोग किया जाएगा। रिसर्च एंड स्टडीज जो एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं ऑफशोर माइनिंग के, उसके लिए भी यह काम किया जाएगा, और डिजास्टर के रिलीफ के लिए भी इसका काम किया जाएगा। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हम बहुत सौभाग्यशाली है, और सौभाग्यशाली है इसलिए सौभाग्यशाली है कि हमारे पास में कोस्टल एरिया बहुत बड़ा है। हमारी कोस्ट लाइन अराउंड 8000 किलोमीटर है, और मोर देन 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमारे देश का है, और इसमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इतनी है कि इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के माध्यम से हम $5 ट्रिलियन की जो हमारी इकोनॉमी डेवलप करने का माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना नहीं बोलता मैं, उनका ध्येय है, उनका निश्चित ध्येय है, उनके आंखों के सामने है, वह पूरा करने में ऑफशोर मिनरल एक्सप्लोरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इतना ही नहीं तो 200 नॉटिकल माइल्स के दूर, यानी जहां पे इंटरनेशनल सीमा शुरू हो जाती है, वहां पे समुद्र तो खजीना है, समुद्र में मिनरल्स कितने मात्रा में होंगे यह तो कोई बता भी नहीं सकता, और उसके लिए भी इम्पोर्टेंट काम वो कर सकते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट बात ऐसी है कि एक्सप्लोरेशन करना, प्रोडक्शन करना, ये दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, और इसका अलग अलग लाइसेंस दिया जाता था, और ये अलग अलग लाइसेंस के जगह पे अभी कंपोजिट लाइसेंस देने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। उसमें इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि पहले जितना एरिया दिया जाता था उससे एरिया कम किया गया है। ज्यादा लोगों को इसमें कंपटीशन करना, ज्यादा लोगों को वहां पे रिसर्च करना, एक्सप्लोरेशन करना, प्रोडक्शन करना, उसकी संधि प्राप्त हो सकती है, और जितना एक्सप्लोरेशन करेंगे उसका आधा भी प्रोडक्शन के लिए उनको मिल सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि ये लीज जो मिलेगी वो टोटली ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑक्शन मोड में दी जाएगी, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस नहीं जो पहले यूपीए के गवर्नमेंट में होता था, लेकिन ऑक्शन मोड से ट्रांसपेरेंट बेसिस पे यह रहेगी। लेकिन यह होने के बाद में उसको ऑफशोर माइनिंग जो करना है ये लंबी प्रोसीजर है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत लगता है, और इसके लिए उसको कंसेशन जो है दैट इज गिवन फॉर द 30 years which can be extended more for the 20 years, और ये सबसे बड़ा रिलीफ जो एजेंसीज काम करेगी उनके लिए भी है। अध्यक्ष महोदय, रिजर्व्ड एरिया में माइनिंग
यह भी इम्पोर्टेंट है, ये एक्ट ने सिर्फ गवर्नमेंट को अलाउ किया है कि रिजर्व ऑफशोर माइनिंग का एरिया वहां पे वो काम कर सकते हैं। हाँ, उसके साथ में जॉइंट वेंचर के लिए भी प्राइवेट कंपनीज ले सकती है, लेकिन 75% स्टेक्स ये गवर्नमेंट के ही रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि जो एटॉमिक मिनरल्स है, जिसमें सी शोर, ऑफशोर या डीप सी, ये बहुत रिच है और ये एटॉमिक मिनरल्स के लिए एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट की मशीनरी काम करेगी, गवर्नमेंट की कंपनी भी काम करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कोई गड़बड़ी कर रहा होगा तो उसके लिए भी पनिशमेंट अच्छी तरह से रखी है। पहले तो सिर्फ 50,000 रुपए का फाइन था, इतने बड़े कंपनियों को 50,000 रुपए का फाइन यानी कुछ भी नहीं रहता था। तो यह फाइन की रकम भी 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इतनी बढ़ाई है और इम्प्रिजनमेंट अप टू द 5 इयर्स किया है। यानी टोटली मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल प्रोडक्शन जो हमारे राष्ट्र की समृद्धि बढ़ा सकता है, सागर से समृद्धि निर्माण हो सकती है, वह सागर से समृद्धि निर्माण करने का काम इस बिल के माध्यम से किया गया है। और हमें जो 2047 का जो सपना है कि यह भारत देश दुनिया में 1 नंबर का, भारत माता विश्व में सर्वश्रेष्ठ रहेगी, यह जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, इनकी धारणा है, इनका सपना है, इनका ध्येय है, जो हर भारतीय को वो जीने को बताते हैं, वह पूरा करने का उद्देश्य इस बिल के माध्यम से मुझे दिख रहा है। इसलिए मैं अभिनंदन भी करता हूं और समर्थन भी करता हूं, और आपने समय दिया इसलिए धन्यवाद भी देता हूं। जय हिंद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनिल बोंडे जी। माननीय श्री अयोध्या रामी रेड्डी नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर एम थंबी दुरई। Thank you, Deputy Chairman, sir. Honorable Mineral Minister Prahlad Joshi has introduced the bill, the Offshore Areas Mineral Development Regulation Amendment Bill 2023. Sir, the object is very clear. As Mineral Minister has said, yesterday also, when discussing about the minerals, how they exploited by some private people, and governments are losing the revenues. And also those elements who are taking this kind of some other way and making money, and they are doing anti-social activities also. This is happening in Tamil Nadu coastal area. You know very well the mineral sand of Thoothukudi and Trichendur, that Kanyakumari, that area, the minerals are very valuable thing, containing uranium content also in that. Those things are taken by private people those days and sold and became a very rich people. Then afterwards actions are taken, but still they are not able to take any actions, they are prolonging. Therefore, the private people, when they are using our national wealth like that, this is the appropriate bill he has brought to how to control this. Because those people, I don't want to mention the name because there are litigations there which are going on still about those persons. And those persons, they are taking some other license and taking lot of minerals out and exported those things, valuable things. Then only government realized this is something is wrong on that, or stopped him. But in spite of that, through certain mafias, they used to take up once again like that. Once again the government stopped that kind of exploitation, that kind of minerals. Therefore, the minister now bringing a variable thing. In the case of offshore, onshore mineral resources, auction was introduced in the method of allocation of mineral concession by amending the Mines and Minerals Development Regulation Act 1957
in 2015. Pursuant to the same, since 2015, hundreds of mineral blocks have been auctioned for grant of mining lease companies under the Mines and Minerals Development Corporation 1957. The auction process also generated additional source of revenue to state governments. That is the thing what is said. Appreciating that class, because when he is bringing that kind of classes, definitely state governments also getting lot of benefits. Because I know BJ Janata Dal always requesting their minerals they are taking more, they are not getting the compensation, royalty they are not able to, their accusation is there. Therefore, this is a thing other state, Tamil Nadu government also we are facing the same problem. Yesterday is what Neglect Corporation, what is we are not able to get, the state government not able to get sufficient compensation, and the farmers also facing the problem when their minerals are taking, their lands are acquired by the state government, and this is going on. Therefore, sir, agitation is going on. I requested Honorable Minister to solve the problem that what is Tamil Nadu farmers are facing, especially Kadalur Villupuram area. I said, therefore, here also, sir, the another provision he said, to provide for grant of production lease to private sector only through auction. There is a thing, what I said, is correct. Because those people are using the minerals, the offshore area and other areas. They are not getting any auction, they are not taking. Somewhere, some kind of license they are getting and exploiting, taking these valuable things and doing what I have said. Therefore, the government, central government is also losing money, state government also missing money. That uranium content like that of which is required for our country to produce atom and everything, it is going out of India to other countries where the Pakistan and the other countries going. It is dangerous for our safety of the country. Therefore, I urge the minister, whatever is given. One another thing he has mentioned, very valuable thing, to provide for grant of operating rights without competitive bidding to government or government company or corporation and the mineral bearing areas reserved by the central government. This is a good thing. If you are giving state government or central government, if you are take the minerals, it has been right directly because the part of government is a part of our thing. Assembly or parliament, we are auditors. If at all misusing coming, we are raising here. For example, coal problem, Colgate. What is Colgate? And G spectrum, 2 spectrum, all valuable things. Our mineral things gone away. What the previous government, UPA government, still spectrum case is going on. This valuable mineral which the country spectrum, one party is, and the same way the UPA government, because, sir, I want to say one thing. Yesterday, when the minister resigned, what is the NDA? What is India? NDA is in India only. NDA is in India only. Therefore, UPA is in UPA. UPA. No, I am telling. See, that UPA is up, it has to, UPA up has to go, but it's going down. Speak on the bill. It is going, I'm going down. Yes. Because why am I cases I'm telling? Up, going down because of this is offshore area mineral development because subject. Of valuable our minerals like coal, spectrum. These are misused by the UPA government. Therefore, instead of going up, they have gone down. Finished. Therefore, in NDA is in India, UPA is not in India. Thank you. Thank you. That is all I can say, Thank sir. You. I am appreciating the bill regarding our Honorable Minister brought for regulating, especially Tamil Nadu. I request the Minister, the minerals are exploited and taking without authorization. This kind of action must central government must take. That state government is not at all bothering those Tamil Nadu government. I request Honorable Minister to interfere that what yesterday he said, Tamil Nadu, actually as yesterday Minister said, there is no auction system in Kerala, Tamil Nadu. Said, that is why I want to say, because Tamil Nadu, this auction is not taking place. This is a violation of the rules. Therefore, I request the government to direct the central state government of Tamil Nadu not to involve this kind of activities, giving one kind of only certain monopoly people making money
and is by taking government resources for the self-interest. Thank I you, want to- Dr. I was supporting this bill. Thambidurai ji. Honorable Minister has already taken note of your concern. Thank you. Honorable Dr. K. Lakshman. 10 minutes. Thank you, Deputy Chairman, sir. I stand here to support this important bill because the government has brought this bill in order to deal with offshore mining in the torrential waters, continental shelf, exclusive economic zones and other maritime zones of India. Since it is in offshore, the areas fall within the territorial limits of India. Hence, the powers to grant licenses and leases for exploration and exploitation of minerals were delegated to Indian Bureau of Mines within the Government of India. Because the offshore area doesn't come into the purview of any states, naturally, the Indian government has to take into consideration. So this present government, India government led by Narendra Modi ji and our Honorable Minister Sri Prahlad Joshi, they have amended the MMDR Act of 1957 in the year 2015, which has brought major changes, and most of the major changes are also been brought into the purview of these minor minerals, which has given most of the states a surplus revenue, and also the powers also have been delegated to most of the states. Really, I congratulate the Modi government for bringing up these path-breaking amendments for the last few years. Even the present, this OMDR Act, this Offshore Area Mines Act, which is also an innovative and economic building activity. Sir, the trust proposed to be set up with the contribution from production of these leaseholders in offshore areas definitely will support in exploration of minerals, wealth, and also in this exclusive economic zone. The trust will be useful to support the livelihood of the fishermen who are now losing this livelihood because of this offshore mining. I am sure this trust will not only help India taking to bigger strides, but also we have seen the true trust which have been already established as per this MMDR Act in 2015. And particularly this district mineral fund which has been established by the respective states, almost to my knowledge, they have collected 77,000 crores which are instrumental in implementing the welfare and development activities for mining affected people, and more particularly the fishermen. But sir, I would like to bring it to the notice of our Honorable Minister through you, sir. This DMF is not being properly used by the respective states. In fact, this fund is supposed to be used for the welfare of the people who are involved in it. But the Government of India has to interfere or monitor or have a audit. Otherwise, the fund collected for the welfare of these people are not being properly. Again, another trust, sir, by name National Mineral Exploration Trust for these projects and newly introduced recently exploration license in the MMDR Act in the recent session in this Parliament will definitely revolutionize mineral exploration in the country. Similarly, formation of this particular Act and trust for funding offshore exploration in the present bill will also revolutionize this area of this particular offshore. Sir, India government under visionary leadership of our Honorable Prime Minister Modi ji has taken up a lot of measures and innovative acts
to make India as a developed country by 2047 within this Amrit Kal period, sir. The government has been formulating number of new policies to promote blue economy, to use ocean resources for economic growth. India has got a long coast line of nearly 8,000 kilometers, where the fishermen, most of them, it's a livelihood. And Prime Minister Modi ji has also come up with a Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana with a budget of outlay of 20,000 crores, wherein fishermen get 50% subsidy for buying the equipment, and women the fishing who are in that field get 60% subsidy. So, government is already working to develop ports, coastal roads, railway infrastructure, tourism, fisheries, wind energy, etc. as a blue revolutionary economy. So, even the Geological Survey of India has been working for the past many years and discovered number of important minerals in offshore, like beach sands and lime muds, etc. But this has been again transferred to Indian Bureau of Mines, sir. So the present amendment bill will not only help in mining of these minerals and promote further exploration offshore, sir. So these offshore areas could not be mined because of, as rightly pointed about the member, because of the scams by this UPA government. Not only in the offshore, even in the sky, they left nothing during this 10 years period. Almost 20 lakh crores have been now how they have looted during their tenure. So in the present bill, the concept of composite license for granting rights for exploration as well as production is introduced, sir. Really, in the process of dredging, these minerals exploited without causing any environmental problems. So the exploration license granted before the date of this act will become ineligible. Act allows to reserve the areas to government sector. The validity of the concession provides for 50 years. The bill mandates competitive bidding for production, lease and composite license to private industry. Sir, with this bill, naturally, not only the blue economy, now this present government enacting laws for the empowerment of livelihood of the people who are now depend upon this profession, and particularly this mineral, offshore mineral, will be given a fillip for Indian economy, sir. I once again stand to support this bill introduced by our Honorable Minister Prahlad Joshi, and I also congratulate the Modi's government for bringing such, enacting such laws. Thank you, sir. Thank you very much. धन्यवाद डॉक्टर के लक्ष्मण जी। अब माननीय वी विजय साई रेड्डी जी। Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, I rise to support this bill on behalf of my party and my leader, Y.S. Jagan Mohan Reddy. Sir, numerous studies have established that seabed mining operations can harm the biodiversity. See, there are three issues, sir, I would like to bring to your notice through you to the Honorable Minister Prahlad Joshi ji, sir. Sir, in fact, we have 7,500 kilometers of coastline covering about 13 states, and my state is also one of that states, sir. And that is the reason why this bill is very important bill, sir, and it gains significance. Sir, I came from one of the 9 coastal states and then remaining union territories. The well-being of marine diversity is so important and has a crucial relevance to my state particularly, because the many people living in the coastline are dependent on the sea and operations from the sea, sir. For example, fishermen, they are completely dependent on sea, so for livelihood. Sir, while deep sea mining operations cannot be undermined, I am not saying that they should be undermined. They should be carried out because they are very important for the country's development and economic growth. It should not, however, it should not come at the cost of the people residing in the coastal areas, sir. Sir, and at the cost of damaging the environment also. Sir, there is a parallel need to protect the socio-economic well-being of the people who depend on
the oceans and for their livelihood, sir. I strongly urge the government in this regard to consider drafting a seabed mining policy. There has to be a policy. Of course, there is an act which is easing the operations and then facilitate the mining operations in the seabed. There has to be a policy in this regard which will protect the interest of the people who are living and dependent on the coastal areas, sir. Specifically and also the biodiversity interests. Sir, the second point which I would like to bring to your notice through you to the Honorable Minister is Article 297 of the Constitution. Of course, it's a prerogative of the Union government. It is the subject of the Union government, and the owner of the mineral is Union government, and it is an undenying fact, sir. However, sir, I have to explain one fact here. Deep seabed mining operations have numerous implications, as I have already stated. Therefore, there is a need to ensure that there is a mechanism in place whereby the coastal states will be able to put their concerns to the central government. So, it is my request to the Honorable Minister is the central government, while making the law, because 13 states, including union territories, are covered under this particular act, sir. Of course, though it is applicable throughout India, particularly these 13 states are affected by this, sir. The coastal state should be made an integral part of the deep sea mining process through dialogue and consultations, which the Honorable Minister, according to me, has not done it, sir. And the third point which I would like to bring to your notice, sir, the examining the financial viability. Sir, this is very, very important, sir. Sir, offshore mining is highly capital intensive, sir, highly capital intensive. And the Government of India has launched a deep sea ocean mission with a cost of 4,077 crores, which is commendable and which should be applauded, sir, for the period 2021 to 26. Sir, while it is commendable, it should be noted that deep sea mining is unexplored area, and where the operations have to be conducted in the interest of the people and interest of the economy. Sir, one important point is 36 financial institutions world over, not only in India, sir, world over, managing about 3.3 trillion euros. And as I was told you, it is a capital intensive, sir. Euros, the assets and the asset released a joint statement. These institutions have released a joint statement calling on the government to refrain from deep sea mining until the commercial risks are understood properly. That is the reason why private operators and private entrepreneurs are not willing to come forward and invest money in this particular area, even though it is a capital intensive. That is point number one. Secondly, it has these 36 financial institutions world over have given a warning, sir. Sir, due to these apprehensions, financial viability, private participation, and investment in this field has not been forthcoming. I request the Honorable Minister to clarify exactly how the government proposes to address the financial risks associated with the deep sea mining and how it will incentivize the private players and the financial institutions to engage in this field, sir. Thank you very much, sir. I support this. Thank you, Mani Vijay Sai Reddy ji. Mani Sri Ramji. धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे इस इम्पोर्टेंट बिल पे बोलने का अवसर प्रदान किया है। और मान्यवर साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी के मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी। मान्यवर, ऑफशोर एरिया माइनिंग बिल 2002 के बारे में आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूं। 2002 में माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और ये इम्पोर्टेंट बिल लाया गया था। उसका लाने का मकसद एक था कि समुद्र के अंदर जो इकोसिस्टम है और जो बायोडाइवर्सिटी है उसे कैसे बचाया जाए, क्योंकि उस वक्त भी बड़ी तेजी के साथ में अवैध माइनिंग शुरू हुई। उस अवैध माइनिंग को रोकने के लिए, पूरी तरह से इकोसिस्टम को बचाने के लिए, नेचर को बचाने के लिए उस वक्त 2002 में सरकार ने बिल लेकर के आए। अब उस बिल में को कमजोर करने के लिए अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया। लेकिन मैं माननीय आपसे कहना चाहता हूं, इसके
लंबे अरसे तक हमें भुगतना पड़ेगा। इसके जो दुष्परिणाम आने वाले हैं पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। अभी बॉन्डे जी बोल रहे थे कि समुद्र मंथन से सब कुछ मिला है, तो उसी समुद्र से आज भी हमें लाइफ मिलती है। मोर देन 60% जो ऑक्सीजन है उस समुद्र से आती है, जो उसके अंदर की हरी घास है, जो उसके अंदर शैवाल है, उससे आती है। और तो और उसी समुद्र के चारों तरफ करोड़ों लोगों की एक मछुआरे जो कम्युनिटी रहती है वो रहती है, जिनको करोड़ों लोगों का परिवार चलता है, उन्हें रोजगार मिलता है। वो मछलियां पकड़ते हैं, मछलियां पकड़ करके अपने परिवार को चलाते हैं, सी फूड्स वहाँ पे हैं। अब इस माइनिंग से नुकसान क्या होने वाला है कि जब माइनिंग की हम लाइसेंस देंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां उस माइनिंग की जाके समुद्र के नीचे जाकर के चट्टानों को निकालने का काम करेंगे। चट्टान तो ऐसे निकल नहीं जाएगी, जाल फेंक देंगे चट्टान निकल जाएगी। चट्टान को निकालने के लिए हम बड़े बड़े विस्फोटक लगाने पड़ेंगे। चट्टान को निकालने के लिए हमें बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीनें वहां पे पुट करनी पड़ेंगी। उसकी वजह से नुकसान ही होगा कि वहां का शैवाल खत्म होगा, वहां की हरी घासें खत्म होगी, वहां पे केमिकल होगा, वेस्टेज अंदर पहुंच जाएगा, उसकी वजह से सी फूड खत्म हो जाएगा, शैवाल खत्म हो जाएंगे, घास खत्म हो जाएगी, और जो फिशरीज है वो सारी खत्म हो जाएगी। अगर नहीं भी खत्म हुई तो डीप सी में जाके रह जाएंगी। और उसकी वजह से क्या होगा कि करोड़ों लोगों को रोजगार जो मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी इफेक्ट क्या आएगा कि हमें ऑक्सीजन भी वहीं से मिलती है। 60% ऑक्सीजन आज भी हमें समुद्र से ही मिलती है। उसकी तरफ भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। और इसमें और खास बात बोली गई है कि लाइसेंस, एक ही लाइसेंस से हम बड़े एरिया तक उसमें माइनिंग कर सकते हैं। उसमें रेगुलेटिंग बॉडी कौन सी है, कितने एरिया में वहां पे उनको निकालना है, कितने एरिया में उनको परमिशन दिया गया है, कौन चेक करेगा। जब आज की सिनेरियो में मैं देखता हूं कई सारे केसेस आते हैं कि उनको जमीन अलॉट की गई है कोल निकालने के लिए, जमीन अलॉट की गई स्टोन निकालने के लिए, बिजनेसमैन उससे कई गुना जा करके कोल निकालते हैं, कई गुना जा करके स्टोन निकाल लेते हैं, जो अवैध होता है। लेकिन समुद्र के अंदर से कौन नापेगा कि कितनी एरिया में उनको काटना था, कितना एरिया में रॉक निकालना था। ये सारा एक बहुत बड़ी एक चिंता का विषय भी है, क्योंकि अगर हम आने वाली जनरेशन के लिए कुछ सोच कर नहीं जाएंगे तो वह आने वाले जनरेशन उन दुष्परिणामों को भोगने का काम करेगी। मान्यवर, यही मेरा आप सबसे कहना है कि समुद्र को मंथन, समुद्र हमें सब कुछ दे रहा है, ऑलरेडी हमें सब कुछ अभी भी दे रहा है कि अभी कुछ नहीं दे रहा। हमें सबसे बड़ी जो चीज मिलनी चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी दे रहा है और हमारे तमाम लोगों को रोजगार भी दे रहा है। तो इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन गरीबों को रोजगार की तरफ भी ध्यान देखें कि जो मछली पकड़ते हैं, मछली पकड़ के अपने परिवार को चलाने का काम करते हैं, उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। नो डाउट बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बिजनेसमैन हो जाएंगे, लेकिन बहुत बड़े तबके का हम रोजगार भी छीनने की तरफ जा रहे हैं। इसकी तरफ माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय राम जी, माननीय मंत्री जी का जवाब। सर, ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023 के इस चर्चा में भाग लिए हुए सभी हमारे एमपीओ को मैं डॉक्टर शमशीद पात्रा, अनिल बोंडे जी, तंबी दोरे जी, लक्ष्मण जी, विजय साई रेड्डी और राम जी का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। और मैं शुरुआत में तो यही बताना चाहता हूं कि दिस इज नॉट सीबेड माइनिंग। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ में होता है विद इन आवर EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो बोलते हैं। सारे दुनिया भी कर रहे हैं, सिर्फ भारत नहीं कर रहे हैं। सारे दुनिया अपने जो 200 नॉटिकल माइल तक जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें हम माइनिंग करते हैं। उसके लिए भी हमारे ये कानून के द्वारा और रूल्स के द्वारा भी देयर आर सो मेनी सेफगार्ड्स। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये लॉ तो अभी हम नहीं ला रहे, ये 2002 से एग्जिस्टेंस में है। और 2002 के बाद 2010 में अलॉटमेंट कैसा हुआ, ये क्या हुआ, मैं बाद में उसके ऊपर आता हूँ, के बारे थोड़ा जिक्र भी हुआ है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि environment regulation will be followed and the states and the other stakeholders also will be duly consulted. This assurance I am giving. The offshore area
all laws are applicable, and not only that, Section 19 and Section 20 of the Act clearly specifies that all protection to marine environment and person will be ensured. There is a provision in the law by Section 19 and 20. And before notifying any offshore area for the grant of lease, Ministry will consult many ministries, including Ministry of Fisheries, Forest, Climate Change, and Home Ministry, Defense Ministry, and State Government. So there is no question of any violating the law और बायोडाइवर्सिटी का, फिशरमैन का, जो समुद्र के तट पर जो रहते हैं उसका जीवन का पहले प्रायोरिटी वही है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो करना चाहिए, इसके कारण हम इसको टच ही नहीं करते, ऐसे नहीं होता। वी कांट टच दिस एट ऑल, ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के देश जैसे द माइनिंग इन म्यांमार, थाईलैंड, ऑफशोर एरिया माइनिंग मैं बोल रहा हूँ, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, नमीबिया, these are all the countries which are already mining it. And उधर भी फिशरी भी होता है, कोस्टल के मीन्स ऑनशोर पे लोग बसे चुके हैं, they are already there, they are staying from quite some time. So these are all the things happening. And now the question is, why we are bringing this law is, and also one more thing about the concern, after that I will come to the point. The offshore area mineral trust also we are establishing it, and that is going to ensure the mitigation of the, if at all there is any adverse impact, to mitigate that adverse impact of the offshore mining, disaster relief, and the benefit of the person affected by the exploration and the production. तो इसमें पूरा प्रावधान हमारा है। तो इस बिल लाने का जरूरत क्या पड़ी? सर, जैसे मैंने पहले ही कहा, सारे दुनिया में तो ये हो ही रहा है। अप टू 12 माइल्स इट इज आवर, हमारा ही एरिया है। आफ्टर दैट इट इज आफ्टर 12 nautical miles it is exclusive economic zone, and where we have right, and many countries they are already mining there. बट हमारे देश में क्या हुआ, 2002 तक, जब तक एनडीए सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार तक, कोई भी इस देश के इतने बड़ी मात्रा में, we have got around 7,570 kilometer of the coastal line, and हमारा total land mass है around 32 lakh square kilometer, और 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर अधिक से हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। दिस इज ए वेरी वास्ट एरिया। इतना वास्ट एरिया में, इतना वास्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, ऐसे तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का तो डिपार्टमेंट अलग है, उसका एक्सप्लोरेशन वगैरह चल रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन स्टैंड है, उसमें हेवी मिनरल्स है, लाइम मड है, पॉलीमेटालिक नूडल्स है, क्रस्ट है, ये सब रहते हुए भी 2002 तक एक कानून भी हम बना नहीं पाए। वी कुड नॉट इवन enact a law even till 2002. And 2002 में, when Vajpayee ji government was there, the bill was enacted. But इसमें देखो कैसे चाल चलता है। 2004 में हमारा सरकार चली गई, 2006 में इसका रूल बना दिया यूपीए गवर्नमेंट, और इस रूल के बाद जो कुछ भी अलॉटमेंट हुआ 2010 में रूल बना, 2006 में रूल बनाया, 2010 में 64 ऑफशोर ब्लॉक्स इसका नोटिफाई हुआ।
ये 64 ब्लॉक्स को नोटिफाई होने के बाद 377 applications were received from 53 applicants. The screening committee selected 16 applications for the grant of 62 exploration. इसके बाद के जो हुआ है वो सुनिए. तो बाद में how 16 were selected? Inquiry was ordered. Chief Vigilance Officer CO IBN inquiry किया, उन्होंने review किया. 5 companies of the same group having common director and the common address got 28 blocks out of 62 blocks. Means किसी को पहले ही आइडेंटिफाई करके देने के लिए व्यवस्था करके ही इसको नोटिफिकेशन किया और those companies were registered. Those companies were registered, sir, those companies were registered after the date of notification of invite in the application for the grant of exploration. CBI inquiry हुआ. CBI in its preliminary inquiry reported that there was no clear-cut guidance for the shortlisting of the applicants and the criteria for the selection of the applicants for the issuance of the explorer's license was fixed after the receipt of application. Means criteria ही बिना क्राइटेरिया फिक्स करते हुए एप्लीकेशन वेर कॉल्ड, एप्लीकेशन रिसीव हुआ, बाद में क्राइटेरिया फिक्स हुआ. तो कैसे चलता था देश, कैसे चलता था, कैसे डिस्क्रिशनरी, जैसे कोयला में किया, जैसे एक ऑफिस से, एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस से चिट्ठी आता था, कोयला का ब्लॉक आवंटन होता था. दिस वाज द एलिगेशन. एंड जैसे अब मैं कल भी कहा, तो इनके कारनामे के कारण एक अधिकारी भी जेल के जाने के कगार में है और एक एमपी और एमपी का सुपुत्र भी जेल में जाने के कगार में है. दिस इज द सिचुएशन. सो दैट्स व्हाई वी आर ब्रिंगिंग एन इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन. ए 2002 एक्ट को वी आर ब्रिंगिंग एन अमेंडमेंट एंड दिस अमेंडमेंट में मैं ज़्यादा लंबा बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि कल मैंने बहुत ही डिटेल में मैंने ऑनशोर माइनिंग के बारे में जो बात करते समय मैंने सब कुछ कहा है. इसीलिए इसमें जो है एटॉमिक मिनरल युक्त ब्लॉकों का ईएल और पीएल, केएल, पीएसयू को दिया जाएगा. अगर एक्सप्लोरेशन करते करते अगर एटॉमिक मिनरल्स मिलता है तो भी देन दैट विल बी अगेन गो टू दी पीएसयूज एंड इट विल नॉट बी विद द प्राइवेट पीपल. और इसमें ये भी कभी कभी क्या होता है, ये ऑनशोर माइनिंग में भी होता है और ऑफशोर माइनिंग में भी होता है. ब्लॉक्स ऑक्शन में ले लेते हैं लेकिन बाद में काम नहीं करते हैं. लेकिन अगर 4 बरस तक वो प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो उनका जो लीज होल्डर का इनका हम लीज खत्म हो जाएगा. और उसके बाद भी अगर प्रोडक्शन शुरू करके 2 बरस तक वो बंद रखते हैं तो भी उनका प्रोडक्शन बंद, उनका लीज कैंसिल हो जाएगा. तो इसीलिए इसमें एक ट्रांसपेरेंट रिजिम का जरूरत था. हमने जो कुछ भी अभी मैंने बताया 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर आउट इसके 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारा लैंड मास है, उसमें 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारा ऑफशोर ईजेड है. इसीलिए आकार के हिसाब से भारत का ऑफशोर एरिया मेनलैंड के लगभग 61% है. एंड 1947 से मीन्स देश आज़ाद होने के बाद आज तक टिल टुडे नथिंग इज बीइंग डन. देयर इज ए वास्ट मिनरल्स, बहुत बड़ा खनिज संपत्ति इसमें है. इसमें जब हम एक्सप्लोरेशन करते हैं इसमें हमारा जो क्रिटिकल मिनरल है वो भी मिल सकते हैं. जैसे मैंने पहले भी कहा, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में ऑलरेडी हमारा जीएसआई ने एक्सप्लोरेशन करके more than 300 blocks have already been identified and the blocks have been created. More than 300. उसमें heavy minerals है. इसका साइज भी 1 minute by 1 minute जो शमशीद जी ने बताया है, और सैंड है, और उसके साथ
हैवी मिनरल प्लेसर्स है, लाइम मड है, फॉस्फोरेट है और क्रस्ट एंड नूडल्स विद द कोबाल्ट एंड निकल। अभी हमको लिथियम के साथ जब हम रिन्यूएबल एनर्जी में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में जा रहे हैं, हमको कोबाल्ट भी इसी मात्रा में, इतनी बड़ी मात्रा में हमको चाहिए। तो इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कंपोजिट लाइसेंस जो हम देते हैं वो भी ऑक्शन के थ्रू होगा, प्रोडक्शन लीज जो देते हैं वो भी ऑक्शन के थ्रू होगा, और इसके साथ ही साथ OMADR ट्रस्ट हम रचा रहे, इसके मैं एक्सप्लेन भी किया हूं। इसके कारण मैं यही बताना चाहता हूं, जैसे उल्लेख किया हमारा ये साथी कि अभी जो समुद्र मंथन हुआ, सावन का महीना भी है, श्रावण का अधिक श्रावण मास में समुद्र मंथन हुआ था। ये ज्यादा जानते हैं हमारे डिप्टी हाँ, डिप्टी चेयरमैन तो ऐसे बहुत बड़ा ज्ञानी है, ज्ञानी है इस मामले ही इज द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन एंड whom I have ever met, and इसी पवित्र मास में समुद्र मंथन हुआ था। और पहले 14 बहुरत्न निकाले गए थे, 14, बाद में अमृत मिला था, उस बीच में विष भी मिला था, वो शिव ने पी के शोकंठ हो गया, नीलकंठ हो गया। अमृत काल में भारत को विकसित भारत बनाने का अमृत निकाल लो आप। तो इसीलिए आज इस बिल पारित करने के बाद मुझे तो आशा है, तो मनुष्य तो आशावादी रहना ही चाहिए, अगर निराशावादी है तो आत्महत्या करना पड़ता है, तो कोई भी निराशावादी नहीं रहना चाहिए। वी शुड बी ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। तो क्या होगा बाद में, एक्सपेंसिव है, तो ऐसे उनका कंसर्न मैं जेन्युइनली अप्रिशिएट करता हूँ। इट इज एक्सपेंसिव, बट एक्सपेंसिव है ऐसे तो हमारा नॉर्म ही नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। सो एंड मेनी पीपल अदर देन विजय साई रेड्डी ऑल्सो, मेनी पीपल हैव एक्सप्रेस इतना एक्सपेंसिव है, कौन आएगा? ठीक है, कानून तो बनाओ, नियम तो बनाओ, अगर उधर इतना अच्छे संपत्ति है, क्योंकि ऑलरेडी ब्लॉक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, blocks have been created by the GSI. GSI has invested the money and people may come. अगर आपके पास नियम भी नहीं है, कानून भी नहीं है, कौन आता है? तो इसीलिए ये जो समुद्र मंथन के इस पवित्र मास में हमने ये बिल लाया है, और हजारों वर्ष पूर्व हमारे जो पूर्वज समुद्र के गर्भ में जो मिलने वाली रत्नों का और उनके मूल्यों का पता था, वो जानते थे कि जीवन, जल जीवन भी है और जीविका का साधन भी है। तो इसीलिए द सी सस्टेन द लाइफ एंड लाइवलीहुड, वारिधि ही जीवन जीवको पार्जनम च, ये तो हमारा संस्कृत का एक श्लोक भी है। तो इसीलिए ये अमृत काल में, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक श्रावण मास में समुद्र मंथन हुआ और अभी अमृत काल है सर। डिप्टी चेयरमैन सर, दिस इज द अमृत काल नाउ, पीएम हैज कॉल्ड इट एज अमृत काल, और पीएम साहब ने यही कहा है, यही समय है, सही समय है, और भारत का अनमोल समय है, रत्न निकालो, और अनमोल रत्न निकालने के लिए ये बहुत बड़ा एक स्टेप है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेप एंड द बिग स्टेप वी आर टेकिंग। ऑफ कोर्स कभी कभी होता है, MMDR एक्ट में जब हम बात करते थे, शुरुआत में कंसल्टेशन शुरू किया, कुछ राज्यों ने प्रोएक्टिवली बहुत सपोर्ट किया, कुछ राज्यों ने विरोध किया, लेकिन उसके बाद का परिणाम मैं बताता हूं आपको। 2015 में तो हमारा MMDR एक्ट हम ऑक्शन ओनली रिज्यूम शुरू किया, लेकिन 2021 में एक 3-4 वर्ष का अनुभव देखते हुए जो बदलाव लाया, उसके बाद 168 ब्लॉक्स हैव बीन ऑक्शन, इट इज एवर हाईएस्ट, एंड इसमें और कहीं भी देश में ऐसे आवंटन या ऑक्शन नहीं हुआ होगा। तो इतने बड़ी मात्रा में, और बड़ी मात्रा में रेवेन्यू भी स्टेट्स को मिला है। लेकिन इससे पहले कैसे होता था, मैंने ऑलरेडी बताया हूं। हर रोज क्या होता था,
2004 से 2014 के स्पेशली के बीच में नया घोटाला कौन क्या आया है वही देखते थे, लेकिन इस 9 वर्ष के नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में whether it is in the mineral sector, whether it is in the coal sector or any sector of the government of India or government, there is no allegation of corruption. तो घोटाला का तो छोड़ो, एक करप्शन एलिगेशन भी अभी तक लगा नहीं पाए, और थोड़े कुछ क्रिएट करने का, इंजीनियर करने का, जब मैन्युफैक्चर करने का जब कोशिश किया, तब सुप्रीम कोर्ट में भी उसको खारिज कर दिया. This is the track record of this government, sir, and I would like to request that this bill is going in a big way. It is once, if it comes to force with the support of this August House, then we will form the rules, we will draft the rules, and उसमें भी हम सब consultation करेंगे. Ultimately, ये फेडरल स्ट्रक्चर है सर. जब फेडरल स्ट्रक्चर में सबसे बातचीत करके ही हमको जाना पड़ता है. और एक कंसर्न व्यक्त किया है, मैंने भूल गया था, बीच एंड मिनरल के बारे में. आपका बीच एंड मिनरल PSU के पास ही रहेगा. दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई टू द एंटायर नेशन. तो विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अपील टू द हाउस that it may kindly be passed, and that will be a revolutionary step as far as offshore mineral is concerned. Thank you, sir. धन्यवाद माननीय मंत्री जी. The question is that the Offshore Areas Mineral Development and Regulation Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 to 24 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 24 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Mani Shri Prahlad Joshi to move that the bill be passed. Sir, I move that bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. कुछ सेकंड ये आएगा, अभी सेकंड आएगा, ये वाला आएगा. सेकंड बिल ये डिस्कस करेंगे. द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ periodicals बिल 2023. Mani Shri Anurag Singh Thakur to move a motion for consideration of the press and registration of periodical bills 2023. सर, आपकी अनुमति से मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण बिल द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द periodicals 2023 सदन में पेश करने जा रहा हूं. सर प्लीज प्लीज पीछे जो माननीय सदस्य खड़े हैं, प्लीज आपस में बात न करें, प्लीज. सर, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की दृष्टि का प्रमाण है कि किस तरह से अंग्रेजों की समय के जो थके हारे कानून हैं, या मैं कहूं जिनका आज के समय में उतना महत्व उस दृष्टि से ना हो क्योंकि बहुत कुछ बदल गया है, और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलाने के लिए भी आज इस कानून का बहुत बड़ा महत्व है. सर, इस कानून के अगर मैं मुख्य पहलू पे कुछ बात करके शुरुआत में रखूं, और सभी माननीय सांसद जब अपनी बात रखते हैं तो मैं अंत में विस्तार में अपनी बात कहना चाहूँगा. सर, ये प्राचीन जो हमारे आउटडेटेड कॉलोनियल लॉज हैं उनसे मुक्ति पाने का एक समय भी आ गया है, और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने का भी. और सर, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा देता है,
सर, इससे पहले जो बिल या इससे पहले का जो कानून है वो 1867 का है, 1867 का। और उस समय अंग्रेजों की मानसिकता थी कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के माध्यम से वहां पर ही प्रिंटिंग प्रेस का और पब्लिशर्स को अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती थी और एक तरह से उसको सेंट्रली कंट्रोल किया जाता था। और सर, आपसे अच्छा तो शायद इस पूरे सदन में किसी को अनुभव पत्रकारिता से ज्यादा ना हो। अगर संभव होता कभी हम आपको इस पे सुनना चाहते तो आपका एक बहुत लंबा अनुभव, शायद हमें इसमें बहुत लाभ मिलता है इस बिल पे सब कुछ जानने का। लेकिन क्योंकि आपके माध्यम से मैं सदन के सामने बात रख रहा हूं तो इतना ही कहूंगा कि उस समय अंग्रेज इस कानून को लाए थे अपने हितों को ध्यान में रखकर, देश पे शासन करने के लिए, हमें अपने गुलाम बनाने के लिए। लेकिन 1867 के बाद भी सन 2023 तक किसी ने यह प्रयास नहीं किया कि इस गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाई जाए और ये जो सेंट्रली कंट्रोल्ड रखा जाता था इसको समाप्त करने का समय आ गया है। ये जो एक तरह से रुकावटें एक के बाद दूसरे चरण पर होती थी उसको कैसे खत्म करें। सर, मैं कह सकता हूं ये सिंपल भी है, स्मार्टर भी है, साइमल्टेनियस प्रोसेस भी है और ऑनलाइन हम इसको करके जो 8 चरण पे इसकी आपको स्टेप्स लेने पड़ते थे समाचार पत्र या पत्रिका को रजिस्टर कराने के लिए, अब 8 चरण नहीं होंगे, केवल एक स्टेप पर ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सर, जब मैं ये कहता हूं एक स्टेप पर तो इसका मतलब है कि पहले डीएम के पास आप जाते थे, वो वहां पे जाके उसको पेपर दो, फिर वो 6-8 महीने अपने लगाता था, फिर आरएनआई के पास दिल्ली आता था, फिर टाइटल वेरिफिकेशन यहाँ करता था, फिर नीचे जाके फिर रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर वापस आरएनआई के पास आओ। सर, इसके 8 जो कदम थे, पब्लिशर फाइल्स declaration before the DM for title allotment, DM authenticates declaration, publisher files application to RNI for title verification, third, चौथा RNI verifies title, पांचवा publisher files declaration before DM for publication sir, छठवां DM authenticates declaration और सातवां था publisher applies to RNI for registration of publication और आठवां जाके सर होता था RNI grants certificate of registration। अब सर इनको ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है डीएम और आरएनआई यानी कि प्रेस रजिस्ट्रार के पास। 60 दिन के अंदर अगर डीएम जवाब देते हैं तो आरएनआई उसको कंसीडर करके सर आरएनआई उसको कंसीडर करके उसको लाइसेंस दे देगा। अगर डीएम जवाब नहीं भी देता है तो 60 दिन के बाद आरएनआई यानी कि प्रेस रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट दे देगा। अब आपको 3 साल का इंतजार या 2 साल का इंतजार नहीं, केवल 2 महीने के बाद आपको अपनी प्रेस को पीरियोडिकल को रजिस्ट्रेशन का अवसर मिलेगा। अब जब मैं ये बात कहता हूं तो सर इसको ऑब्स्टैकल्स हम खत्म कर रहे हैं, हर्डल्स खत्म कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा लाभ किसी को मिलने वाला है तो स्मॉल और मीडियम बिजनेसमैन को, जो मध्यम और सूक्ष्म जो हमारे समाचार पत्र वाले हैं, मैगजीन वाले हैं, प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनकी उद्यमशीलता को इससे फायदा मिलेगा। और जो तीसरा इसका बात सबसे बड़ी बात है कि इस देश में अधिकतर कानूनों में एक भय रखा गया था कि आपको जेल हो जाएगी। तो इसमें भी ऐसे 8 प्रावधान पुराने कानून में है कि आप छोटी से छोटी गलती करते थे तो आपको फाइन के अलावा भी 6-6 महीने की सजा थी। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जैसा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने डीक्रिमिनलाइज बहुत सारे कानून को किया है। हमने यहां भी अधिकतर जो प्रोविजंस हैं उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। आपको केवल पेनल्टी लगेगी, वो भी होगा पैसे के, आपको फाइन लगने वाला है। आपको इसको पेनलाइज करके आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार जनरल के पास ही आपको अधिकतर फाइन देके मुक्ति मिल जाएगी। केवल एक केस में जब आप बगैर लाइसेंस लिए, बगैर परमिशन लिए अगर कोई अखबार छापते हो या कोई मैगजीन छापते हो, तब भी हम आपको पहले नोटिस देंगे कि 6 महीने के अंदर आप इसको बंद कर दो। अगर आप 6 महीने के अंदर बंद नहीं करते हैं तब जाके आपको 6 महीने की जेल हो सकती है। अदरवाइज पूरी जेल वाली सजाओं से हमने आपको मुक्ति दिला दी है
डीक्रिमिनलाइज हमने इसको किया है, ये भी एक बड़ा कदम उस दिशा में है। और यही नहीं माननीय सभापति जी, ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि छोटे छोटे अपराधों के चलते आपको जेल में फेंका जाए। तो हमने इसमें भी वो प्रावधान किए हैं कि हमने इसको डीक्रिमिनलाइज करने का काम किया है। और बाकी भी बहुत सारे बिंदु इस बिल के हैं, मैं उन सब पे भी आऊँगा। मैं चाहता हूं कि मैं सभी माननीय सांसदों को एक बार पहले सुन लूं, ये अपने विचार रखें और उसके बाद मैं अंत में अपनी बात कह सकूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस सोच के साथ ये सरकार बिल लेकर आई है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देंगे, हम डीक्रिमिनलाइज करेंगे, लोगों को जेल में डालने वाला काम नहीं होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देंगे और साथ ही साथ सिंपल, स्मार्टर एंड साइमल्टेनियस प्रोसेस शुरू करेंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन होगी। इससे समय भी कम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस देश में पत्रकारिता के साथ जुड़ सकेंगे। इसको भी एक बल मिलने वाला है। इसलिए मैं आशा करता हूं सभी माननीय सांसद अपने उत्तम से उत्तम सुझाव भी देंगे और इस बिल को अपना समर्थन भी देंगे। धन्यवाद। प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। मैं अब उन माननीय सदस्यों के नाम पुकारूंगा जिनके नाम चर्चा में भाग लेने के लिए प्राप्त हुए हैं। श्रीमती सुलता देव, धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय। ये जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल्स 2023 के ऊपर मुझे बोलने के लिए मिला है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं अभी सुन रही थी माननीय मंत्री जी को, जो बोले कहीं ना कहीं आज हम लोगों को ब्रिटिशर राज से धीरे धीरे छुटकारा मिल रहा है। इसके लिए मैं ये बिल जो आ रहा है इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं मेरी पार्टी बीजू जनता दल से इस बिल को समर्थन करती हूँ। ये बिल पुराने 156 साल से पहले हुआ था, द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 को। इसको रिप्लेस करने के लिए ये नया बिल आ रहा है, इसका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पुराने एक्ट को बनाया गया था, अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे थे, हमारे सारे प्रिंटिंग प्रेसेस, सारे अखबारों को संरक्षित करके रखने के लिए और उन सब बुक न्यूज़पेपर्स को पंजीकरण करके रखने के लिए जो हमारे भारतवर्ष में छपा जाता था। और उसके क्यों रखा जाता था? क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी को जैसे बोले उनके ऊपर पढ़ के उनके ऊपर फिर पेनल्टी इम्पोज किया जाता था, किसी किसी को जेल में भी डाला जाता था, जो क्रिमिनल बोले कि अभी डिस्क्रिमिनलाइजेशन हो गया है। ये भारतवर्ष में ब्रिटिश राज को दर्शाता था कि वो क्या करते थे हमारे ऊपर। ये आइन तब केवल इसलिए आया था पूरा कंट्रोल करने के लिए प्रेस प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स को, इनके ऊपर हेवी फाइन्स पेनल्टीज को ज़बरदस्ती थोपा जाता था, यहाँ तक कि कारवास जो बोल रहे थे जेल में भी डाला दिया जाता था। हमारे स्वाधीनता के बाद भी ये लॉ अभी भी कहीं ना कहीं है। इसका इतने साल के बाद अगर इसका हम लोग अमेंडमेंट करके जो एक्ट ना चेंज करें तो भी ये सबको प्रॉब्लम है, इसीलिए इसका अमेंडमेंट होना ज़रूरी था। इस बिल में उसको हटा दिया गया है, मतलब इसको डिस्क्रिमिनलाइजेशन किया गया है। एक बहुत अच्छी बात है ये। हाँ, मगर इस बिल में और एक बात है जो सोचा जा रहा है, मैं वो बोलना चाहती हूँ। जो एक पॉइंट है जो आपको जेल लेके जा सकता है आप जो करेंगे तो in the 2023 bill, punishment of jail up to 6 months is envisaged only in cases where periodical and published without a certificate of registration and the publisher failed to cease the printing of such publication even after 6 months of a direction issued
to that effect by PRG. देखा जाए तो ज़्यादातर कुछ फाइनेंशियल पेनल्टीज इस बिल में रखा गया है कि अगर कुछ हो तो कुछ फाइनेंशियल पेनल्टी दिया जाएगा। इस बिल में एक अपीलेट अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन अपीलेट बोर्ड, जिसमें एक चेयरपर्सन जो प्रेस ऑफ इंडिया PCI प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI का होगा और 2 मेंबर्स जो है रहेंगे वो भी PCI के रहेंगे, जो कि सुनवाई करेंगे जो केसेस उनको आएगा और रिफ्यूज़ल ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मगर जो कि सुनवाई करेंगे रिफ्यूज़ल ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मगर मैं यहाँ एक बात बोलना चाहूँगी कि इस बोर्ड में एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि अपना अपना रीजनल लैंग्वेज में एक मेंबर रहना चाहिए, क्योंकि जो बोर्ड है जो बैठेंगे जो PCI के होंगे चेयरमैन और मेंबर, वो तो पहले से भी है PCI, मगर जब देखा जाए तो अगर कुछ केसेस आते हैं किसी रीजनल लैंग्वेज रीजनल कोई स्टेट से, अगर सपोज उड़ीसा से आए कहीं से अगर आए जो समझ नहीं पा रहे हैं वो जो बैठे हैं, उनके लिए कम से कम वो रीजनल लैंग्वेज से एक मेंबर होना चाहिए उस बोर्ड में, जो कि जो अपील करने के लिए आते हैं उनको ठीक तरह से सुने और उनको सही तरह से उनको जस्टिस मिले। और एक बात है, जो किसी को कोर्ट ऑफ लॉ में जाने से पहले 2 दिन हुआ जो एक बिल पास हुआ है मेडिएशन बिल, मैं सोच रही हूँ कि ये मेडिएशन बिल भी इसमें लगाना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार चाहती है कि मेडिएशन के जरिए बहुत कुछ सरल और संभव हो सकता है, कंप्रोमाइज हो सकता है, तो इसमें भी मेडिएशन बिल का हिसाब से उसमें भी लगाना चाहिए। मेरा मानना है कि इस एक्ट में सारे वेब चैनल्स भी आना चाहिए। मुझे मालूम है कि सारे वेब चैनल्स हो, सोशल मीडियाज़ हो, ये सब डिजिटल इंडिया में आते हैं, मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आइन जो लॉ है ये एक जैसा है, एक जैसा होना भी चाहिए, क्योंकि जो प्रिंट में आता है, जो जर्नल्स आता है, पीरियोडिकल्स में आता है, सेम न्यूज़ अगर देखा जाए तो उसको फिर ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वेब चैनल्स वाले भी पेश करते हैं, और जिसको देखा जाए तो एडिट करते हैं, गलत एडिट करते हैं, मगर उनके अगेंस्ट में ज़्यादा कोई कानून है नहीं। उन सबको अगर इसमें डाला जाए तो ये और भी अच्छा रहेगा। मैं एक एग्जाम्पल दूंगी मेरे स्टेट उड़ीसा की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे चैनल्स वेब चैनल्स अच्छा न्यूज़ नहीं प्रोड्यूस करते, अच्छा न्यूज़ भी प्रोड्यूस करते हैं, मगर कहीं कहीं नहीं, बहुत जगह पर बहुत वेब चैनल्स आप लोग को ये मालूम होगा, मानेंगे भी ये कि बहुत गलत तरह से न्यूज़ पेश करते हैं। उड़ीसा में एक बार ऐसा हुआ, बारिश हो रही थी और 2-3 दिन तक कंटिन्यूस बारिश हो रही थी, तभी एक वेब चैनल और न्यूज़ चैनल वाले ने दिखाया कि एक वाटर टैंक, बड़ा सा वाटर टैंक धंस रहा है, मगर सबको पर सब सारे ऑफिसर्स को भी परेशानी हुई, सबको परेशानी हुई, हम सबको भी देखे हम कि उड़ीसा में ऐसा कहाँ पर हुआ, सब देखने के लिए लगे तो देखा गया कि उत्तर प्रदेश का ये बहुत पुराना एक वीडियो था, जो एक पानी का टंकी नीचे धंस रहा था, वो तभी का भी नहीं, बहुत पुराना वीडियो था, उसको चला के बार बार बोला जा रहा था, देखिए उड़ीसा में ऐसा है, पानी बारिश हुआ तो पानी की टंकी धंस गई। तो ऐसे जैसे गलत न्यूज़ आता है, जैसे गलत अफवाहें आती है, अगर उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो फिर ये तो मतलब एक छतरी के चलते 2 नियम हो जाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि जो लोग न्यूज़ में किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी इसी में लाना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से आपके जरिए अनुरोध करूँगी। और एक बात है, बहुत सारे ऐसे पेपर्स में बहुत सारे ऐसे न्यूज़ भी आते हैं जिन लोग गलत न्यूज़ छापते हैं, बहुत गलत न्यूज़ छापते हैं, जैसे कि CM के बारे में हो, PM के बारे में हो, किसी पॉलिटिकल लीडर से लेके एक अच्छा इंसान तक जो कि सोसाइटी में माने रखता है, उनके लिए ये बिल में प्रावधान होना चाहिए कि जैसे मानहानि का मुकदमा करने के लिए हम लोग को कोर्ट में जाना पड़ता है, इस बिल में ऐसा होना चाहिए जो बोर्ड बैठेगा, अगर ये सरलीकरण हो रहा है, जो बोर्ड बैठेगा उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा फाइन इम्पोज करना चाहिए कि कम से कम जो लोग ऐसा गलत न्यूज़ छाप रहे हैं उनके ऊपर ये बोर्ड का भी कंट्रोल हो।
कोर्ट जाना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता सर, इसीलिए मैं ये चाहती हूँ ये नियम भी इसमें लागू करें। और मैं फिर से तहे दिल से सरकार का शुक्रगुजार हूँ, सरकार को धन्यवाद देती हूँ कि एक ऐसा बिल लाए जो चतुर्थ स्तंभ हम लोग बोलते हैं, उनको सुरक्षा देने के लिए, सारे मीडिया को इसमें सुरक्षा देने के लिए बिल आया गया है। इसके लिए मैं इसको समर्थन करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद माननीय श्रीमती सुलता देव जी। माननीय श्री पवित्रा मार्गेरिटा। Thank you, sir, for giving me this opportunity to speak on this very crucial bill on registration of press and periodicals. So, while any legislation pertaining to press and publication easily evoke fears of censorship and all, and I will try to speak from all the perspectives, because fortunately I started my career as a journalist, as an editor of a monthly magazine in Assam. It was one of the highly circulated monthly magazine called Maya. So I have got the experience of this title verification, registration, and luckily right from content generation to composing, to type it, to proofreading word by word from comma to semicolon, then to layout, to print, to bind, to distribute. So it's really exciting and painful also, and to produce or to publish the periodicals, be it monthly magazine or daily. Sir, first thing first, this bill, with my experience, I'm to submit it, that this bill seeks to replace the legislation that is 156-year-old. The Press and Registration Books Act 1867, it was essentially a tool of the British East India Company to exercise their control over the intellectual activity of the Indians during the British Raj. That is why I'm really thankful to my minister and the government for taking the steps to replace the 156-year-old act. Sir, India is a country with booming publishing industry that is estimated to be worth about 25,000 crore. And according to an estimate, we have in India 1,44,000 daily newspaper and other periodicals. In my state of Assam also, according to the data available, in my state of Assam, we have 42 dailies, 58 weeklies, 24 monthlies, and other some bi-monthly and fortnightly periodicals also. All of us know that we have a very strong, our country has a very strong history in print media. The first periodical was published in 1780, that was Bengal Gazette. And in Assam also we published the first periodical in 1846, that is Arunodaya. Since the inception of our publication or periodicals in India, we have a very strong legacy, we have a very strong history. And according to an estimate, in India, daily more than 250 books are published. So it's a huge industry, and it is so dynamic. It is very tough for Act, which is 156-year-old. It is very tough for the Act to manage this huge and this booming industry. That is why this amendment on registration of press and periodical bill is being moved, and we welcome it. Sir, the Press and Registration of Periodicals Bill is a reflection of the Honorable Prime Minister Narendra Modi's commitment for ease of doing business and transparency in business, in the process of business. So the main point I have noticed here is the title verification and registration. So 25 years ago, I had the experience of title verification. Me myself applied for. At that time, we had to collect the form
from the DM's office or DC's office, Deputy Commissioner's office. Then manually you have to fill up. Even now, you have to fill it up manually, although it is available in the website. You can download it and to fill up the columns and to submit it to the concerned district authorities. Then, after some verification, they will send it to the Office of the Press Registrar General. Then they will verify whether the proposed or desired names are already been enlisted in the long list. It may be now, it may also be now manually, I don't know. But it's a long process. So suppose I have collected the form at my name as a publisher is being written, then my address, then the proposed name, suppose number 1, anyone, the group or groups or individuals application would have to fill the columns, the desert names. Number 1, suppose East India Company. Number 2, suppose East India Company. Number 2, suppose India Bansabad Company. Like this, 3-4 names they may apply for. And the registrar will verify whether the names are already in use. Then they will again send to the district office. Then the district office will summon the applicant, another verification. It's a lengthy process of 6 months to 1 year or maybe more. But this new bill, this new bill will enable in doing all these things in a very simplified, a very smart way. Everything will be available online. One has to apply online. The verification of title, simultaneously, as our Honorable Minister has mentioned, simultaneously, the registration process will also proceed. So this system will take hardly 6 months, 2 months, as said by our Honorable Minister. So as a person from that fraternity also, because I have already mentioned that I have been a journalist, so I really welcome this bill. This will help especially the small and the medium publishers to get all the official process to get it done very smoothly. Secondly, sir, this bill demonstrates the government's intention of strengthening the country's intellectual core by enabling the environment. The previous colonial era law, that previous law had the provisions of imprison and prosecute for the slightest non-compliance. So, and in the eyes of our NDA-led government, this is contrary to the spirit of the Constitution and the democratic values. That is why already we have come to know that decriminalization of many clauses are being adopted in this law. So I wholehearters welcome this bill because it will replace 156-year-old colonial legacy. First, and it will really practically provide practically it will help to do the easy registration, and it will empower the entrepreneurs in the field of press and publication to do the business easily and in a very transparent way. So I thank Honorable Prime Minister Ji and my friend Honorable Minister Anurag Thakurji for this bill, and I support on behalf of myself and my party. Thank you, sir. धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय श्री एस निरंजन रेड्डी। सर आज मैं मेरे डिवीजन पे ही हूँ। आज आपने थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आई एम राइजिंग टू सपोर्ट द बिल। sir, the first thing that I wanted to say is many times we focus on what is contained in the bill to see whether the bill is good or not. But I wanted to congratulate the Honorable Minister and the government for two very important things which are not a part of the bill. When the 2019 bill was contemplated, sir, they had two provisions. One was they wanted to also make a provision for registration of digital media. I have noted the concern expressed by one of my preceding speakers, honorable member, that also needs to be covered. But sir, as I understand, this is dealing with print media and publications. I'm sure the government may want to come up with a separate law for digital media, and it requires a separate law because that will have different challenges, that will have different issues that the government may have to deal with. So this is first of the issues which I'm very happy the government has left out of this legislation.
So the second thing I'm very happy about is the fact that the government has dropped the proposal to have conditions prescribed for the purpose of issuing government advertisements and also for accreditation for the purpose of issuing advertisements. I think, sir, this was done, I would think, very advisedly, because the government possibly did not want to give an impression that they would want to control the media in any manner. So these are two things that go in furtherance of enabling freedom of press. So I wanted to start with congratulating the government on two things which are not a part of the bill. Sir, the bill facilitates, the Honorable Minister has already explained, so I would not want to say why I agree with all of the things that are said. There are two other things that I want to bring the Honorable Minister's attention and the government's attention and this August House attention to. There is one section, clause 12, which seeks to provide that a publisher of a periodical shall furnish the Press Registrar General an annual statement in respect of the periodical at such time and by giving such particulars as may be prescribed. So the rules will be made, sir, for the purpose of prescribing how the annual statement would have to be published. There is a little bit of a concern that these rules should not extend to requiring the publications to give more information than is necessary for the purpose of this act, so that there is larger freedom available. But I would request the government to consider one thing, because there is a large portion of paid news, sir, that is now becoming a common feature of press reporting. Whether the government would want to provide, when it is prescribing a form in future, with regard to the percentage of paid news or the amounts that are collected out of paid news, so that at any appropriate time in future, if the government wants to deal with and regulate this paid news, the government would have the database and the material available with it to make an appropriate. Sir, I repeat that this is not at the cost of press freedom. I am saying this must be at the cost of paid news and fake news not coming in and polluting the real news. Sir, then I would also want to compliment the government that they have taken steps for ensuring that principles of natural justice are covered at every stage. And also when they constituted an appellate board, sir, they have ensured that there is an independence that is there in the appellate board. So it is very judicious in all aspects as I see. Sir, so I support the bill on behalf of my party and my Honorable Chief Minister Jagan Mohan Reddy ji, because it makes compliance easier, it makes online intimation instead of application. It decriminalizes, which is very important. One of the honorable members who preceded me said there is still a criminal provision in respect of only one aspect, but that, sir, is a default provision. After they are told to do something, when they fail in the first instance, even thereafter if they don't do, within some reasonable time given, then it provides for a deterrent punishment. This is, I think, sufficiently protective, sir. Sir, then my last suggestion would be that there is one clause 12, subclause 2, sir, which requires every publication to deposit a copy of the newspaper or publication with the state government and press registrar general. Sir, I would suggest the government could consider whether this could be deposited by way of an electronic form instead of physically being delivered, because it is otherwise facilitating the ease of business. Sir, I thank you, sir, and I support the bill. धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपको। माननीय डॉक्टर एम थम्बे दुराई, आपके बिना कोई भी बिल पूरा नहीं होता है। Without your speech, no bill is. Thank you very much, sir. Because the democratic way, I have to my duty on behalf of my party. I have to say my views in any bill comes. That is the way. It is the opportunity given to me and sent here in the esteemed house I am speaking, sir. Thank you very much, sir. First of all, as others said, I was also a publisher, editor in the student days. I started the journal. I became through that only entered the politics also. The students' movement, I published magazines and articles as a student leader, collecting so many articles among the students. That is in Tamil Nadu. That is I know the experience. When applying for the title, as he said, we have to wait for a long time. Then after registration, afterwards Delhi we have to come, and here they will say so many issues. Then they will cancel my names. They won't accept whatever you give the choices.
cumbersome, I face that. I know that. That is where now Honorable Minister has brought a new bill to simplify things. I appreciate that what has come. So one thing, why the media, the print media, it is 1950, 150 years old, are telling, colonial period. See, colonial, every period, sir, not only colonial period, even emergency period, even afterwards, even during the early of the Congress government regime, what our people, especially Tamil Nadu people, our dividend movement suffered a lot. Whatever article, for example, if we take our movement, Tandai Periyar, Anna, like that, so many people, intellectuals, every leader, secondary leaders used to have their own magazine. They write articles to enlighten the people, the rights of the people, social justice. These are the concepts to propagate that common man. At that time, media used. But at that time, you know, even the Congress regime, even Periyar supported Kamaraj at that time. Whatever he writes at that time, they are put going to the jail, they are put to the court. The court will fine. Then Periyar said, I am for social justice. Even you are putting, I don't pay the fine. Whatever judgment you give, how many years imprisonment, he used to go to jail. Therefore, not only colonial British period, even afterwards independence also, the government, or the previous governments, they used as a weapon to stop writing articles and punishing them. That is not, therefore it is not a colonial. Even after independence also it happened. That is what we faced. And also, sir, regarding the freedom movement also, we take Bharatiyar. He is a patriot. He used to write so many articles, poems for freedom struggle. Subramania Bharatiyar. Subramania, full name is Subramania Bharatiyar. So what the Sangamam you had at the time, Bharatiyar place you celebrated in Kasi. That kind of Kasi Tamil Sangam. At that time I am telling, such kind of patriot is a big revolutionary in the poet in Tamil. Wherever our Prime Minister going is quoting his poems. That is, we are proud of that. Our Prime Minister Narendra Modi ji quoting Bharatiyar's thing many times. Therefore, such kind of person, when he is writing reality for freedom for the track, they are imprisoned many times. They are yours, more or less forced to go to Pondicherry, that is Puducherry, what we are calling. He cannot live in Tamil Nadu, Madras province at that time, Madras province that is called. Therefore, he stayed there only. Because of there stayed long time, because that is a French colony at that time. Because the Madras province is controlled by British people, at that time he went there and stayed. Because of stayed there, he faced a lot of health problems. Because of that, he lost in the young age itself, he died. Such kind of, at that time, British period, when we were writing articles, publishing his magazines, everything banned and punished, put imprisonment. That way he suffered. Like that. Sir, this is the way how the British period also happened. Even afterwards, in Congress period also, emergency period also, during Indira Gandhi period, what so many people suffered, so many people stopped. Therefore, whoever writing, they cannot write. Therefore, this is a continuous process happened. Now, because the media has changed, now is the now digital media. Now, television is the popular thing. So our minister, broadcasting minister, he also controlled because our Yamo is also sitting behind, Sir Murugan also sitting, he knows that both are in the thing. They know that is very popular nowadays. The print media is also there. There is no press. But apart from that, now this is the popular media is going on. In that also there is no censorship. We are telling cinema things for censorship is there. For televisions, where is the censorship, you tell me? They are gone publishing wrong information and creating, damaging the government. Nobody is challenging that. Some kind of, what I don't want to say because this kind of youngsters' mind is diverted, what they're giving wrong information, wrong pictures, like this going on. Especially the advertisement. The advertisement, the TV, because you want to see that advertisement, even
putting the underwear, this everything, how they are giving publication. Is it the way? Is it necessary, that kind of advertisement testing in the media? And also, to promote the products, actors become the ambassadors in the TV. And ambassadors now, these TV actors. Real estate business also, if you take land and is selling his plots, one ex-minister, many actor is telling, lands are available, fees prices. Is it a fact? We don't know. Therefore, these media is also giving this kind of wrong information to the public, and investment also, some kind of cheating, chit funds like that, making. People are seeing this kind of advertisement, instead of depositing money in our banks, that scheduled banks, they are going this kind of chit companies and losing money. Then afterwards, they are shouting, they are complaining to the police and everything. They are any poor man suffering. Especially salaried people, before their retirement, they want a future for the family. This kind of advertisements in the media is coming, not only print media, even the visual media, everything is coming. The people are depositing. Afterwards, the man is absconding who collected the money, and the people are. These are the things going on. Those days, British people controlled our expressing our ideas for freedom movements. Then afterwards, independence, the ruling parties at that time, they are not allowed the opposition party to express their views, they controlled. Now, the media is giving wrong information, and also at the same time, these kind of long advertisements, that also another way it is going on. This is also this is a message going on. Printing media, especially books, publications. There are good books are coming, but because of some court cases, the books are banned. They are banned. Valuable books, a good philosophy or good message, good ordinary people, they are going on. Therefore, these are the things that the minister must consider. Apart from that, I am simply making that, putting the registration side, debating for that, all is simplified it. I appreciate the minister for that, taking that kind of effort. At the same time, how to control this kind of wrong information giving, this especially social media apps or so many these things are giving wrong information, that also be controlled, because this concerned minister is here. This society must not be spoiled. The youngsters are spoiled now. The students are not getting proper information, because education can be even good education through this media. Print media or visual media or social media, digital system, all can be done, which is appreciating that present government, Narendra Modi ji government, has taken a lot of steps, and our young minister, our other ministers, I am from Tamil Nadu, they are, both are here, they are supporting, because they have brought this bill, I am having good faith, our party has good faith in that we are supporting the bill brought by this. Thakur sir, thank you very much. धन्यवाद. माननीय श्री नरेश बंसल. माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। महोदय, ये विधेयक पुराने अंग्रेजों के समय के 1867 के उस विधेयक का स्थान लेगा जिसने भारत को सब प्रकार से गुलाम बनाते हुए पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी अपने राज को बचाए रखने के लिए एक केंद्रीकृत अधिनियम बनाया था, और उसका प्रभाव हमने स्वतंत्रता के आंदोलन में भी देखा, और जब देश के ऊपर आपातकाल लगा उस समय भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के साथ सरकार ने जो व्यवहार किया, उस समय भी ये अधिनियम सरकार ने इसका दुरुपयोग किया। समाचार पत्रों में संपादकों के कॉलम छुटकर आए, उन्होंने छापे नहीं इसके विरोध में, लेकिन उनको कारावास की सजा भी दी गई, क्योंकि सरकार के पक्ष में न होकर आंदोलन के पक्ष में वो जो लिखते थे। और एक प्रक्रिया और भी हुई कि उसके कारण से
जनता को सच्चाई पता नहीं लगती थी। जनता को सच्चाई पता लगे तो उस समय मेरे जैसे नौजवान भी जो भूमिगत आंदोलन में थे, उन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन के भी उस समय नौजवान थे आप? हाँ, उस समय मैं 19 साल का था साहब। हाँ, तो आज नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि मैं बूढ़ा हो गया, मैंने ये कहा उस समय नौजवान था, तो भूमिगत आंदोलन में था। मेरे जैसे कार्यकर्ता जनता को सच्चाई देने के लिए बिना रजिस्ट्रेशन के पत्र निकालते थे, जनता तक सच्चाई पहुंचे, और अनेक उसमें से पकड़े भी गए, उनको सजा भी हुई। इस और रजिस्ट्रेशन, कोई नौजवान जब पत्र पत्रिका निकालने के लिए जाता है तो पुराने अधिनियम के अंतर्गत उसको 2 साल 3 साल केवल रजिस्ट्रेशन के ही चक्कर काटने में लगते थे। डीएम ने नहीं दिया, रजिस्ट्रार नहीं दे सकता था। अब इस अधिनियम में इतना सरलीकरण कर दिया गया है कि उसको 2-3 साल अपने चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उसका उत्साह ठंडा नहीं होगा। वो 2 महीने के अंदर ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपना रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकता है और पत्रिका निकाल सकता है। जिन प्रावधानों के अंतर्गत जेल की सजा थी, मोदी जी की सरकार जब से आई है, नरेंद्र मोदी जी की, तब से पुराने कानूनों को बदलने का सिलसिला हमने प्रारंभ किया है, जो गुलामी के प्रतीक हैं। ऐसे लगभग 1500 कानून अब तक निरस्त किए जा चुके हैं। कल ही हमने जनविश्वास बिल इस सदन ने पारित किया, उसमें भी इसी प्रकार का प्रावधान है। 200 से ऊपर कानून विभिन्न प्रकार के निरस्त किए गए और यह प्रक्रिया अभी आगे भी चलेगी। मैं उसके लिए मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार से प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए और नई नई पत्रिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए इस बिल को वो लेकर के आए हैं। इसमें अतिरिक्त समय भी नहीं लगेगा और प्रस्तावित कानून में एक अपीलीय निकाय की भी व्यवस्था की गई है, जिसका अध्यक्ष भारतीय प्रेस का परिषद का अध्यक्ष होगा और उसमें 2 सदस्य जो प्रेस परिषद के रखे गए हैं। मेरा उसमें एक सुझाव भी है मंत्री जी को, यदि संभव हो तो उसमें आजकल पत्र पत्रिकाओं को हमारी बहनें भी बहुत प्रकाशित करती है, उसमें एक महिला भी सदस्य हो अपीलीय बोर्ड में तो और अच्छा रहेगा पत्र पत्रिकाओं में और नारी सशक्तिकरण की दृष्टि से भी। ये मेरा सुझाव है। डिजिटल समाचार मीडिया उद्योग को विनियमित करने के एक कदम में हमारी केंद्र सरकार यह प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रेशन विधेयक 2023 लेकर आई है। इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बनाए रखना है। महोदय, इस विधेयक के कानून बन जाने से डिजिटल मीडिया हाउसों को 90 दिन के भीतर प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के साथ पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। नया कानून सरकारी इकाई को किसी भी उल्लंघन के लिए डिजिटल प्रकाशनों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है और उसे पंजीकरण निलंबित करने या रद्द करने और जुर्माना लगाने का अधिकार है। विशेष रूप से डिजिटल समाचार पोर्टल में वर्तमान में पंजीकरण आवश्यकताओं का अभाव है। सभापति जी, जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी नई आ गई है, डिजिटल ओटीपी प्लेटफॉर्म्स, ये सब चीजें आ गए हैं, ये भी प्रकाशन के इसमें मुझे लगता है मंत्री जी इसको दायरे में लेकर के इनको भी नियमित करने का प्रयास इसमें होगा। यह विधेयक पत्रिकाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने और प्रकाशकों के खिलाफ मुकदमा चलाने और कारावास के प्रावधान को खत्म करने का प्रयास करता है। विभिन्न मंत्री जी ने अपने प्रस्तुतिकरण में कहा भी कि विभिन्न जो कारावास की सजाएं होती थी उनको समाप्त करके केवल जुर्माना देने का काम किया है। केवल एक उसमें 6 महीने की सजा का है, वो भी 6 महीने तक अगर बिना रजिस्ट्रेशन के प्रकाशन होता है और उसका नोटिस देने के बाद भी वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो 6 महीने की सजा का प्रावधान है। यह विधेयक पारदर्शिता लाने और व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। महोदय, यह एक सरल प्रक्रिया प्रदान करेगा जिससे छोटे और मध्यम प्रकाशकों को अत्यधिक मदद मिलेगी। मैं बताना चाहता हूं महोदय कि 1867 के अधिनियम में केवल जिला मजिस्ट्रेट ही किसी पत्रिका की घोषणा को रद्द कर सकता था, जबकि प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास उसके द्वारा दिए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करने या निलंबित करने की स्वतः शक्ति नहीं होती थी। लेकिन यह विधेयक पीआरजी को पंजीकरण,
निलंबित अथवा रद्द करने का अधिकार भी देता है। विधेयक यह भी प्रावधान करता है कि जिस व्यक्ति को किसी अदालत द्वारा आतंकवादी कृत्य या गैर कानूनी गतिविधि से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो या राज्य की सुरक्षा के खिलाफ कुछ भी किया गया हो, उसे समय समय पर पत्रिका निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये विधेयक उन प्रावधानों को भी खत्म करने का प्रयास करता है जिनके लिए प्रकाशकों और मुद्रकों को डीएम के समक्ष घोषणा पत्र दाखिल करना आवश्यक था, जिसने पीआरबी अधिनियम के दंडात्मक प्रावधानों को समाप्त कर दिया, जिसने सूचना की अनुचित घोषणा को 6 महीने तक की जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध बना दिया। 6 महीने तक जेल की सजा केवल उन मामलों में तय की गई है जहां कोई पत्रिका बिना पंजीकरण प्रमाण पत्र के प्रकाशित होती है और प्रकाशक पीआरजी द्वारा इस आशय के निर्देश जारी होने के 6 महीने के बाद भी ऐसे प्रकाशन की छपाई बंद करने में विफल रहता है या जानबूझ करके नहीं करता है। महोदय, इसमें अपीलीय बोर्ड, प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड के में अध्यक्ष, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और पीसीआई के 2 सदस्य शामिल होंगे, जो पंजीकरण देने से इंकार करने, कोई जुर्माना लगाने और निलंबन के खिलाफ अपील सुनेंगे। ये अपीलीय बोर्ड इसमें होगा। महोदय, हमारी केंद्र सरकार के द्वारा यह विधेयक हमारे दूरदर्शी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में लाया गया एक क्रांतिकारी विधेयक है। यह विधेयक डिजिटल समाचार मीडिया उद्योग जगत में जबरदस्त बदलाव लेकर आएगा। महोदय, इस महत्वपूर्ण विधेयक को लाने के लिए मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ मैं अपनी पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं, जिसने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस विधेयक का भरपूर समर्थन करता हूं और अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद बंसल साहब। माननीय श्री वी विजय साई रेड्डी जी। Vice Chairman, sir, thank you for the opportunity you have given to me. Sir, I wholeheartedly support this bill. However, I would like to make some suggestions through your good self to the Honorable Minister, Anurag Thakur ji. Kindly listen to me. Sir, 3 points I would like to bring to your kind notice. Sir, as a 4th pillar of the democracy, the press owes the duty to the public, to the Indian public, and adhere to the highest values in the society, and strive towards bringing the truth, real truth, to the forefront. That is the objective with which the press should work. However, sir, the role of the press of late has been severely and adversely compromised for the reasons known to your good self. Sir, one important feature which I would like to bring to your notice is that the entry of corporate companies entering into the field of 4th pillar of democracy. Sir, is it admissible as per the law a corporate company getting into becoming a member of parliament? No, not possible. Is it possible to become a corporate company to become a lawyer? Individual can be a partner in the partnership firm of a law firm, and then he can represent in his individual capacity. Is it possible for a corporate company to become a bureaucrat in the government? It is not possible. However, it is possible in the case of 4th pillar of the democracy. What is the result? The result is that these corporate entities which have got the financial wherewithal are dictating terms to entire 3 pillars of democracy. Therefore, sir, these certain organizations, I am not naming any organization, certain caste outfits, I am referring to caste, certain religious outfits, certain terrorist organizations, certain organizations with ulterior motives,
and certain organizations with political motives, they have impacted the independence of media. Sir, therefore, of the press, and they have fueled the drastic increase in the incidents of fake news, again with the ulterior motives, with the political objectives. Sir, this is to be taken cognizance of. I request, in this regard, my suggestion to the Honorable Minister through you, sir, is that corporate companies may enter into the press media business. But however, the business should be done in the name of Section 25 company. Section 25 of the Companies Act, Old Act, I am not updated. That is, company, in case even if there is a excess of income over the expenditure, that should be not to profit making company. Only those companies should be allowed to get into the media business. Then only the independence of media can be maintained, sir. Sir, the next point which I would like to bring to your notice is the National Crime Records Bureau, a total of 1,527 fake news were recorded in 2022. There is a quantum jump of 214% increase when compared to 2019 and 2021, registering 486 and 882 cases, fake news cases respectively, sir. Sir, the Indian Penal Code, coming to the Indian Penal Code, sir, imposes the criminal punishment on any person who makes the statement to conduce the public mischief. Section 125, sir, 105, does not provide any regulatory framework for governing instances of fake news that perpetuated by the press. Therefore, it is imperative on the government to ensure that the fake news will not be perpetuated by the press for whatever reasons I have stated, sir. So there is an urgent need to bring about the specific laws and regulations to address this menace of fake news, sir. The last point which I would like to bring to your notice, sir, the safety of journalists. Sir, journalists are working there for their livelihood. Of course, there are genuine journalists. There may be one or two journalists who will be resorting to unfair practices. Doesn't mean that entire journalistic community is bad. Sir, the form of fourth pillar of democracy, yet the lives of the journalists are not safe in this country because the government, it is the responsibility of the press and media companies to take care of the journalist lives and living standards, sir. India is among the 5 most dangerous countries among the journalists, killed in 4 deaths in 2021 out of 46 worldwide. Therefore, it is the responsibility of the government to ensure and to make appropriate laws to safeguard the lives of the journalists, sir. And sir, the digital India, the last point, sir. Sir, digital India has been, we are moving towards the digital India. The digital India, the digital media platform have become easily accessible to the common man. We have a cell phone, it can be accessed, and then various tabs are there, and various other electronic instruments are there, sir. The bill takes crucial step towards the ensuring the registration of digital media platforms. Digital platforms continue to remain outside the purview of Press Council Act 1978, sir. It is not. Press Council Act 1978 that has no jurisdiction on digital media. And Honorable Minister is also aware of it. Sir, I have, the Press Council is a regulatory watchdog, and the Press Council of India should have a monitoring rights over the digital media also, sir. Sir, I have introduced a private member bill in this August House to empower the Press Council of India to regulate all forms of digital news and also impose the penalties for the fake news. Sir, I strongly urge the Honorable Minister
to consider bringing the reforms, including the non-profit making companies only can get into the press business. I am not supposed to call it as a business, business without making any profit objective. So thank you very much, sir. Thank you, Reddy sir. Honorable Sri J.K. Vasan ji. Sir, I raise to support this bill on behalf of my party, sir. I congratulate the Honorable Minister, sir. Sir, when the threat of social media is looking large, when artificial intelligence is to take over news presentation in television medium, when digital revolution is taking place, it is high time that we protect print media. This bill will definitely help in finding solutions at time the multiple challenges faced by our press, sir. Sir, we live in the era where print, digital and YouTube journalism is at its peak. This bill will help to bring regulations in the print media, sir. Sir, I suggest our minister for an examination of social media and its influence on positive and negative angles, sir. It is right time to approach by our government to bring this legislation, and again I welcome this bill, sir. Sir, press freedom in India is being seen in growth from district level. Different languages daily are published. It is vibrant democracy. We have freedom of press. Technology helps to bring utmost transparency, sir. This bill will further bring openness in society with, of course, regulations. The proposed legislation, sir, in the bill aims to bring digital news media under the control of Ministry of Information and Broadcasting. Upon receiving Parliament's approval, digital media houses will be required to register with the Press Register General within 90 days. The new law empowers the government entity to take action against digital publication for any violations, and it has the authority to suspend or cancel registrations and impose penalties. Notably, digital new portals currently lack legislation requirements, sir. To complete, sir, I suggest please bring on board various press working journalists, working cameraman, photographer, to listen to the daily problems and work out a mechanism to find a solution, which is there for a very long time. With this, I thank the Minister and support this bill. Thank you very much. Thank you, Vasan sahab. माननीय श्री GVL Narasimha Rao. Thank you, sir, for the opportunity. I'd like to congratulate Honorable Minister and Honorable Prime Minister for such a media-friendly legislation. Sir, this bill is an important legislation from the perspective of press freedom. It will also help in ease of doing media business. It will obviate the need to go to district magistrates and other officials for any unwarranted permissions. Therefore, it also fulfills the government's cardinal principle of minimum government and maximum governance, because DMs have many other things to do rather than do such, I would say, silly things. So I think this is also in the spirit of government's digital governance, because this will obviate the need to submit any papers. It can all be done online. The submissions can be done online, and in a short period of maximum 2 months, as the Honorable Minister said, people can get the licenses. By taking away all the penal provisions for minor violations, government is also expressing its vishwas in people. Yesterday we passed the Jan Vishwas bill, and this bill itself, like the minister said, 9 provisions have been deleted for very minor violations. One of such violations which is mentioned here,
which mandated a jail sentence was if a person could be imprisoned for not printing legibly on a book the name of the printer and the place of printing. Even for this, you could be jailed, as per the current provisions in the Act. So I think it's inconceivable in today's world. So by making this a completely hassle-free and transparent process, the government has come out with a very important piece of media reform, and I compliment government for it. Sir, I'd like to those who criticize our party politically, I think they have to hold a mirror and see what they have done, what has been their record in press freedom. In emergency era, soon after the emergency was imposed, for 2 days, no newspapers came out in this country. More than 250 journalists were arrested. 7 foreign correspondents were expelled from the country. 29 foreign correspondents were banned from entering India because they could report what was happening here. Immediate guidelines were issued to the press, and without a chief press advisor's permission, nothing could be published. And the party which has imposed such media restrictions and censorship, which has throttled the media, which has jailed people, which has banned foreign journalists, today wants to give us sermons in media freedom. It is the same party when in government in 1982, they came out with a Bihar press bill. The bill was passed by the Bihar Assembly by the then Chief Minister Jagannath Mishra, and this bill was passed in a manner of 5 minutes in that state assembly, and it inserted certain provisions into Indian Penal Code to prevent printing and publishing grossly indecent, scurrilous, or matters intended for blackmail, leaving everything for imagination. Anything that the government would consider having scope for blackmail, that could not be printed. This was a direct assault on the press freedom. There was a massive outrage by the media, and the government was forced to withdraw this bill 1 year later. And while withdrawing it, the then Chief Minister Jagannath Mishra said why he brought such a bill in the first place. He said in 1982, the then Prime Minister was upset. According to him, the then Prime Minister was upset with media reports about her differences with her daughter-in-law and was really disturbed. And looking at the manner in which she was disturbed, he said, I got the sense, I got the feeling that I had to do something about it, and therefore he brought in this Bihar press bill. Because something was published about differences between the mother-in-law and the daughter-in-law, very powerful family. And this had to be withdrawn in 1 year. In 1988, the then Prime Minister, because there were a lot of forced revelations and it was becoming very uncomfortable by the government, they brought in a defamation bill. And this bill, this prevented any kind of offensive writings and criminal imputations. They said you would be jailed if you wrote something that is offensive. Naturally, there was a lot of uproar, and this bill also had to be, after having been passed, this bill had to be withdrawn. This was passed in the Lok Sabha before it was brought into the Rajya Sabha because of the media outrage, public outrage, opposition from parties like the BJP, because we stood always for press freedom, media freedom, because of the voice of stalwarts like Atal Bihari Vajpayee ji, L.K. Advani ji. They were forced to withdraw that particular bill. And it is this party today which claims, oh, we are there, we stand for media freedom, and under the BJP, the media is somewhat under attack. And having read out all these provisions, I explained to you, sir, I explained to the August House how the Congress party, under various dispensations, had attacked the media and ensured that
the press was always forced to bend. Famously, Shri L.K. Advani ji, who was himself a Minister for Information and Broadcasting in the Janta government, I think he had once said that the government at that time during emergency wanted the media to bend, but the media actually crawled when there was no need for it. The media went out of the way to placate and please the government. We as a party believe in total media freedom. Honorable Prime Minister has faced the stingest of criticism from the media on most occasions unfairly. But we never, I think he had taken all this in our stride. We believe in media freedom. In this context, I would like to mention one particular reference to the Honorable Minister, and I'm deeply disturbed by it. And I don't know why sections of the media do not get the same kind of, there are some indices that publish which rank India even lower than Pakistan in media freedom. Can there be anything, can there be a bigger joke than this? India being ranked below Pakistan, and I don't know if friends of Zakir Naik are on the panel to assess countries on media freedom. How can India be? So we are rated among the lowest in the country, in the world, and here, I think if I were in the press council, or if I were a person in the media, I would be outraged by this assessment. But therefore, I would appeal to the Honorable Minister to engage with sections of the media, the Press Council of India, and to really ask them to really respond. You cannot be a party to such outrageous international defamatory attempts. This is also a part of India Defame campaign. So therefore, I don't think we should take it lightly, take it in our stride. Certainly, we should take them head on and tell them to explain how Pakistan, of all places in the world, and how countries which have no democracy whatsoever, how they could be rated above India. I think it's nothing but a facade, and this needs to be exposed. Thank you very much, sir. I support the bill. And बहुत-बहुत धन्यवाद आपको. आदरणीय श्रीमती सीमा द्विवेदी जी. महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपके आभारी हूँ. अपने विद्वान माननीय मंत्री द्वारा प्रेस और नियतकालीन पत्रिका रजिस्ट्रेशन विधेयक 2023 को लाने का जो कार्य आज राज्यसभा में किया गया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देना चाहती हूं और धन्यवाद भी देना चाहती हूं कि आपने 1867 के उस काले कानून को समाप्त कर करके एक अच्छा कानून लाने का प्रयास किया है. महोदय, कितने आश्चर्य की बात है कि देश की आज़ादी 1947 में हो गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार बन गया, लेकिन हमारा चौथा स्तंभ प्रेस एवं पुस्तक अधिनियम को 1867 को निरस्त करने का विचार पूर्व की किसी की सरकारों के मन में नहीं आया. महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी की सहृदयता को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनकी सोच के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ. वो कितने दयालु व्यक्ति हैं. आपने देखा होगा कि जब हम किसी मीडिया को कवर करते हुए टीवी में देखते हैं, अखबार में देखते हैं, वो अपने जान को जोखिम में डाल करके कभी रेल दुर्घटना हुई, कभी आग लगी, कभी तूफान आया, कभी आंधी आया, कभी भूकंप आया, वो किस तरह से कवरिंग करते हैं. उनके ऊपर भी एक ऐसा कानून बनाया गया था जो बहुत ही खेद का विषय था. अभी हमारे तमाम विद्वान साथियों ने अपनी अपनी बातों को रखा है. मैं उनके साथ अपने को संबद्ध करते हुए ये कहना चाहती हूँ, आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो कानून इसके पहले था, ये बड़ा ही तकलीफ वाला कानून था. किसी पुस्तक पर मुद्रक का नाम, मुद्रण का स्थान अथवा प्रकाशन का नाम स्पष्ट रूप से न छापने पर भी उसे कैद किया जा सकता है. 1867 अधिनियम में कई उल्लंघनों में प्रस्तावित 6 महीने जेल की सजा का प्राविधान हमारे संविधान मूल्यों के खिलाफ है. महोदय, मुझे लगता है यह विधेयक अखबार शुरू करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से सरल बनाने का प्रयास करता है और इस तरह सभी वर्गों और क्षेत्रों के लोगों को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का
हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। महोदय, यह हमारा विधेयक किसी समाचार पत्र के प्रकाशन और प्रिंटिंग प्रेस की जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय प्राधिकारी के समक्ष घोषणा दाखिल करने की बाध्यता को हटा देता है। इससे अखबार मालिकों को काफी समय और मेहनत बचेगी और अखबार को पंजीकृत कराने की प्रक्रिया तेज और सरल हो जाएगी। मान्यवर, मैंने देखा है कई सरकारों में जो अखबार राष्ट्रवादी खबरों को छापती थी, अच्छी खबरों को छापती थी, मैंने उनको देखा है किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है, किस तरह से अखबारों को जलाया जाता था। मैंने देखा था कई स्थानों पर, मैं जिक्र करना चाहूँगी। अभी केरल की एक घटना को हम जिक्र करना चाहेंगे। वहाँ पर किसी एक पत्रिका ने एक राष्ट्रीय समाचार खबर का उल्लेख किया तो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। ऐसी बहुत सी सरकारें हैं, ऐसी बहुत सी जहाँ पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, वहाँ पर माननीय देखने को मिलता है उनके ऊपर किस तरह से तानाशाही रवैया को किया जाता है। विधेयक किसी समाचार पत्र के प्रकाशन और प्रिंटिंग प्रेस की जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय प्राधिकारी के समक्ष घोषणा दाखिल करने की बाध्यता को हटा देता है। इससे अखबार मालिकों को काफी समय और मेहनत बचेगी और अखबार को पंजीकृत करने की प्रक्रिया तेज और सरल हो जाएगी। महोदय, पत्रिकाओं के शीर्षक आवंटन और पंजीकरण की प्रक्रिया को एकल प्रक्रिया बनाकर सरकार ने लोगों के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाई है और व्यापार करने में आसानी के मंत्र के साथ साथ मीडिया को एक समृद्ध और विकसित वातावरण प्रदान करने का पूरा ध्यान रखा है। पंजीकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया को निर्बाध और पारदर्शी बनाकर सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि विशेष रूप से छोटे और मध्यम प्रकाशकों द्वारा सामना की जा रही वर्तमान समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाए। अब प्रकाशकों और अखबार शुरू करने के लिए भौतिक दस्तावेज जमा करने, जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने और अनुमति प्राप्त करने के लिए महीनों और वर्षों तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को एक अपना सुझाव भी देना चाहती हूँ। वैसे तो कानून बने हैं, हम देखते हैं कभी मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम गलत तरह की टिप्पणियां भी होती हैं और कई साइडों पर अश्लील चीज़ों का भी प्रकाशन किया जाता है। महोदय, इसका प्रभाव हमारे युवा पीढ़ी पर पड़ता है, हमारे बच्चों को के मानसिक के दिमाग पर इसका बहुत गलत असर पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी को यह सुझाव रखना चाहती हूँ, इस कानून में थोड़ा सा इस बात की और चर्चा हो जाए और इसमें थोड़ा सा डाल दिया जाए कि अगर इस तरह से किसी प्रकार का कोई भी मीडिया हुआ, चाहे पत्र हुआ, चाहे प्रकाशन हुआ, चाहे टीवी चैनल हुआ, चाहे हमारा फेसबुक हुआ, कुछ भी हुआ, अगर किसी प्रकार का अश्लीलता वाला बोध होता है तो उसको समाप्त करने का कष्ट करें। और माननीय, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, आप देखते होंगे हमारे घर में, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चे अक्सर कार्टून देखते हैं। आप सभी लोगों ने ध्यान दिया होगा, उस कार्टून में भी छोटी छोटी बातों का इशारा ऐसा होता है कि बच्चे समझते हैं कि ये भी कुछ गड़बड़ है। और मैं सरकार की इस प्रयास की बहुत सराहना करती हूँ, सरकार को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस काले कानून को समाप्त करके उन्होंने हमारे प्रेस के लोगों को भी आज़ादी से जीने का अधिकार दिया और हम आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे समय में यह कानून ला करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं अपनी तरफ से उनको ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय श्री कनक महेंद्र रविंद्र कुमार जी। Thank you, sir, for giving this opportunity to participate in the discussion. Sir, the government has felt that the Press and Registration of Books Act 1867 is procedurally cumbersome and complex, making it extremely burdensome and time-consuming, especially for small and medium publishers, in matters of verification of title, obtaining certificate for registration, for publishing a periodicals. The government is the view of process of furnishing a declaration before local authority, authentication of the declaration filed before the local authority by that authority, and subsequent furnishing application to the Press and Registrar General. First for title verification and thereafter obtaining certificate registration, which was in vogue under the Act of 1867, is both time-consuming and onerous. Further, the punitive fines and penalties, which included the imprisonment,
even for small contraventions, was anarchic and to the constitutional values. In the present age of free press and the commitment of the government to uphold the media freedom, the pre-independence anarchic law is not in sync with the current media landscape. Hence, the government brought this bill with an aim to simple online process of title verification, specific provision relating to circulation and verification, prior approval of the central government publication, suspension and cancellation of the certificate of registration, etc. So, sir, senior journalists and reporters who recently, the present trend is, criticize, rather expose the misdeeds of the government and question the actions of the ruling party or the government, are harassed and subject to the police atrocities. This attitude has to be curbed. If this, sir, the main object of this act, the proposed legislation is based on the spirit of upholding media freedom and ease of doing business by making the entire process of allotment of title and registration periodicals simply and simultaneously through online system without requirement of any physical interface. So the main purpose and object is the spirit of upholding media freedom. Now the present trend is almost several political parties are publishing newspapers, taking advantage of their propaganda in ruling the respective areas. They used to criticize the policies of the others and also other media. Now it became a competition between the media, the ruling party and other political purposes. For example, sir, in Andhra Pradesh, there are two largest Telugu circulated newspapers, Eenadu and Andhra Jyoti is there. They used to criticize the policies of the government and expose the actions of the government time and again. Basing on that, the government used to criticize openly in the name of magazines and criticizing it, sir. If that is there, if that trend is going on in the state of Andhra Pradesh, if it is not the attitude of the government. Speak on bill only. So the government is also, speak on bill only. Concerned ministers and other ministers also used to day in and day out criticize the newspapers and publishing that. Please. So therefore, please sit down. This type of criticism by the government is curbing the practice of the freedom of press. Particularly Eenadu and Andhra Jyoti, the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh also criticizing regularly day in and day out. That is their attitude and interfering. On the contra, the government issued a GO to criticize, to book the cases against the papers and also the owners of the papers. So in these circumstances, unless the government of AP curbed such practices, the central government has to interfere and the central government has to curb such practices, particularly in the state of Andhra Pradesh. Sir, whereas, likewise in the particular, and also the journalists were attacked, physical attack, and again in the state of Andhra Pradesh. No second voice is going on in the state of Andhra Pradesh. If such a stage is there, if such conduct is there in the state of Andhra Pradesh, no freedom of press. I request the Honorable Minister, if this trend is not curbed and curtailed, the government cannot ensure the media freedom, and it has envisaged in the statement and objects of reasons. So therefore, I request the Honorable Minister to take into the cognizance of the attitude of the government. So I once again extend the wholehearted support to the bill and welcome the proposals contained in the bill. Thank you, sir. माननीय श्री कार्तिकेय शर्मा जी, आप दोनों के बीच में थे. Thank you, Vice Chairman, sir, for giving me this opportunity to speak on this historic bill, the Press and Registration of Periodicals Bill 2023. Sir, this bill is a transformative legislation aimed at revolutionizing the media industry and bringing it in line with the evolving dynamics of our modern society. This bill, which seeks to repeal the outdated Press and Registration of Books Act of 1867, marks a significant milestone in our journey towards a more progressive,
and efficient media environment. Today, we reflect on the changing scenarios of the mainstream media from 1867 to the present day. We recognize the immense strides that have been made. Our media landscape has evolved from the advent of the print more than 200 years ago to the digital revolution, from regional publications to global platforms, and from restricted voices to diverse perspectives. The Press and Registration of Periodicals Bill 2023 is a manifestation of our commitment to adapting our laws to the dynamic landscape, to embrace innovation and to fortify the pillars of democracy through an empowered and responsible media. Sir, I have personally been a part of the media industry, spent 17 years in the media industry. I have personally witnessed the challenges and the impediments that media publishers have faced when launching newspapers and editions. Cumbersome processes, bureaucratic hurdles, and archaic practices have hampered the growth and innovation of our media landscape. With the introduction of the Press and the Registration of Periodicals Bill 2023, we are poised to usher in a new era of streamlined processes, increased freedom, and enhanced accountability. One of the paramount achievements of this bill is simplification of the entire process of launching newspapers. Gone are the days when publishers had to navigate through intricate web of procedures to secure titles and clearances from district magistrate offices, and then wait endlessly for files to move to the RNI of India. Today, we eliminate the arduous journey, enabling any aspiring publisher to directly and seamlessly apply for titles, clearances online at the office of the press registrar. This monumental shift in approach reflects on our commitment to ease of doing business and harness the power of technology to empower our media entrepreneurs. Sir, as we intertwine the narrative of the Jan Vishwas Bill, we find a common thread of trust. Both bills are aimed at cultivating trust in the media and trust in the public policies. Just as Jan Vishwas Bill aims to bridge gaps between government and citizens, the Press and Registration Periodicals Bill 23 seeks to bridge that gap between media publishers and their audiences by fostering a transparent, accountable, and credible media ecosystem. I would like to thank the Honorable Prime Minister and the Honorable Minister for bringing such a historic bill. Furthermore, this bill addresses a long-standing concern, the use of draconian clauses that impose jail terms on publishers and owners for minor mistakes. We, as a modern and democratic society, believe in allowing media publishers to operate freely, fostering an environment where the press can fulfill its vital role as the fourth estate, without the fear of undue repercussions. This legislative reform reflects on our dedication to safeguard the principles of free speech and responsible journalism. However, as we stride forward, there remains a crucial consideration that deserves our attention. I would like to, through you, Honorable Vice Chairman, sir, bring certain areas of concern. In the Chapter 4 of Clause 3 of the bill, it is noted that any publisher can use a title in other languages, even if it has been allowed to a publisher in a specific state and language. While we celebrate the freedom of expression and diversity that our country embraces, we must also recognize the immense investment that goes into building a media brand. A newspaper's title is not merely a combination of words. It represents an identity, a reputation, a legacy that has been nurtured over time. Sir, this could lead to more litigation, conflicts, as we live in a globalized world. And because of technology, that becomes even an important aspect. In the light of this, I suggest, and once again would like to thank the Honourable Minister for this historical bill. I would also recommend and strongly urge that if e-papers can also be brought under the same domain, because the origination of e-papers comes from the title of the main paper itself. Although it's a complex issue, it deals with other ministries, but my humble suggestion would be that if e-papers could also be brought in the ambit of this bill, it would be highly appreciated. Once again, I'd like to congratulate the Honourable Minister, and I would like to support the bill. Thank you very much. धन्यवाद कार्तिकेय जी। वैसे मैंने माननीय सदस्यों को किसी को भी पढ़ने से रोका नहीं है, पर अपने नियमों में प्रावधान ये है
कि आप लगातार पढ़कर नहीं बोल सकते, फिर भी मैंने किसी को रोका नहीं है, मैं तो केवल ध्यान दिला रहा हूं। मैं अब अंतिम वक्ता के रूप में माननीय राकेश सिन्हा जी, 5 मिनट का समय आपको। सभापति महोदय, रूपाला साहब ने कहा द प्रेस एंड पीरियोडिकल्स रजिस्ट्रेशन बिल 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब यह कानून बनाया जा रहा है तो प्रेस की स्वतंत्रता के इतिहास में यह एक मील स्तंभ साबित होगा। मैं पुरानी बातों को दोहराने की जगह इस बिल से, इस कानून से जो 2 लाभ होगा उसे मैं रेखांकित करना चाहता हूं। जनमत का उद्योग यानी ओपिनियन इंडस्ट्री केंद्रीकृत जब होता है, जब उसकी एकाधिकार हो जाता है तो जनमत पर अनेक सवाल उठते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें 17,000 से अधिक न्यूज़पेपर्स और 1 लाख से अधिक पत्रिकाएं हैं। मैं एक जानकारी के लिए भी कहना चाहता हूं कि जब माननीय सदस्य कोई बोल रहे हों, उनके और आसन के बीच में से किसी भी माननीय सदस्य को नहीं जाना चाहिए। ये भी नियमों में प्रावधान है। आप अपने चालू रखें। तो मैं यह जब कह रहा था कि हमारे पास लगभग 1.5 लाख पत्रिकाएं और समाचार पत्र हैं, तो इस बिल का इस कानून का जो लाभ होगा, जब जनमत स्थानीय स्तर पर उपजता है, जो जिला, तहसील और कस्बों में उपजता है अखबारों से और पत्रिकाओं से, जिन पर जिलाधीशों का इतना नियंत्रण होता था, छोटे अखबारों पर, छोटी पत्रिकाओं पर जिला के अधिकारियों का दबाव इतना अधिक होता था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस बाधित होता था, जो नई दिल्ली तक पहुंच नहीं पाता था। नई दिल्ली के प्रेस क्लब तक उन घटनाओं को रेखांकित नहीं कर पाते थे। इसलिए यह जो कानून बनाया जा रहा है, इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के क्षेत्र में न सिर्फ एक औपनिवेशिक कानून को समाप्त किया, बल्कि जनमत के क्षेत्र में विविधता, बहुतायता और बहुलता को प्रोत्साहित किया है। मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं, इस बिल की ड्राफ्टिंग करते समय उन्होंने सभी औपनिवेशिक बातों को हटाया है। सभापति महोदय, मैं 2 बातों को रेखांकित करना चाहता हूं कि यह बिल क्यों महत्वपूर्ण है। इस देश के इतिहास का एक विडंबना है कि जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, उसके पहले इस देश में अखबारों ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तिलक का केसरी और मराठा, बिपिन चंद्र पाल का वंदे मातरम, मालवीय जी का अभ्युदय और लीडर, मोतीलाल घोष का अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल नेहरू का इंडिपेंडेंट, ऐसे जो अखबार और समाचार पत्र थे जिसने एक जनमत खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन उस जनमत खड़ा कर जिन अखबारों और पत्रिकाओं के कारण देश को स्वतंत्रता की लड़ाई में सहायता मिली। देश के आजाद होते ही 29 जून 1951 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2023 तक आने में समय लगेगा आपको। बस 2 मिनट 5 मिनट। द ऑब्जेक्शनेबल प्रेस मैटर एक्ट, द प्रेस ऑब्जेक्शनेबल मैटर एक्ट पास किया। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि स्वतंत्र होते ही पंडित नेहरू को यह आवश्यकता क्यों पड़ी। उन्होंने जो 29 जून 1951 को जो लोकसभा में कहा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश को सोचना चाहिए कि प्रथम प्रधानमंत्री को जो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे, और 1951 में उन्होंने कहा, जो बात कही, द प्रेस इफ वांट्स फ्रीडम व्हिच इट ऑट टू हैव, प्रेस को स्वतंत्रता चाहिए, इसको होना चाहिए, लेकिन इसके लिए उनमें बैलेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, यानी मस्तिष्क में संतुलन होना चाहिए, जो शायद ही इसके पास होता है या कभी कभी होता है। प्रेस पर इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी 1951 में हुई, उसी का परिणाम हुआ कि 1975 में
सभापति महोदय, जो दो घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1975 में 258 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कुलदीप नायर भी थे, मीसा के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। लेकिन उस गिरफ्तारी के बाद उस दौरान भी हमारी प्रेस ने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने 28 जून 1975 को जो संपादकीय में रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता को प्रकाशित किया, जिस कविता में उसने लिखा था, टैगोर जी ने कहा था, where mind is without fear and where mind is without fear, head is held high। इस कविता को प्रकाशित करके जो उस समय की व्यवस्था को चुनौती दी थी, उसी समय मसानी का पत्र फ्रीडम फर्स्ट और भूमिपुत्र जो वैद्य प्रकाशित करते थे, सरकार को चुनौती दी। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करने वाले लोग इस देश की प्रेस के इतिहास को नहीं समझ पाए। इस घटना को, इस सभा को और देश को सुनना चाहिए। जब औपनिवेशिक काल में स्वदेश नाम की एक पत्रिका जो इलाहाबाद से छपती थी, उसके संपादक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद संपादक के लिए जो एक विज्ञापन छपा, उस विज्ञापन में कहा गया कि एक संपादक चाहिए। सेवा की शर्तें जो बताई गई, 2 सूखी रोटी, 1 गिलास ठंडा पानी और हर संपादकीय के लिए 3 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा। इसके बावजूद स्वदेश के संपादक बनने के लिए एक लंबी कतार लग गई। जिस देश में प्रेस की स्वतंत्रता का इतना बड़ा इतिहास रहा हो, उस देश में आपातकाल के दौरान जब मदरलैंड, जिसके संपादक केयर मालकानी थे, संपादकों को गिरफ्तार किया जाना, अखबारों से बिजली बंद कर दिया जाना, संपादकों को बाध्य किया जाना। श्यामलाल टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक थे, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। श्यामलाल जी से उनके संपादकीय बोर्ड में एक संपादक ने पूछा कि आप अगले दिन आप क्या लिखेंगे। उन्होंने लिखा, आई विल बी राइटिंग द कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो। अब मैं आगे लिखूंगा आलू की पैदावार कैसे होती है। जब श्यामलाल जी ने यह कहा तो यह व्यवस्था पर बहुत बड़ी टिप्पणी थी। प्रतिपक्ष नाम का एक पत्रिका थी, एवरीमैन नाम की पत्रिकाएं थी। ये सब छोटी छोटी पत्रिकाएं थी, जिसके लिए यह बिल लाया गया है, यह कानून लाया जा रहा है। ऐसी पत्रिकाएं छोटी छोटी जगहों से सामान्य लोग निकालते थे, इन सब पर प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन अंत में मैं जो बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इस देश की स्वतंत्रता को बाधित जब करना हो तो प्रेस पर लगाम लगा दिया जाए। और यह लगाम लगातार इस औपनिवेशिक कानून के द्वारा लगाया जाता रहा। ऐसी सैकड़ों घटनाएं हर साल आती हैं जब छोटी छोटी पत्रिकाओं पर जिलाधिकारी का, जिलाधीश का दबाव पड़ता है। उसके संपादक और पत्रकार उस दबाव में लिखते हैं और उसके खिलाफ संघर्ष करते हैं। मैं आपसे सभापति महोदय एक्सप्रेस टावर को भूल गया। सभापति महोदय, आपने समय की इतनी पाबंदी कर दी कि मैं बहुत चीजें भूल रहा हूं। आपने तो गागर में सागर भर दिया साहब। सभापति महोदय, 2 छोटी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मंत्री जी की बात हम सुनेंगे। जब प्रेस की स्वतंत्रता का सवाल उठाया गया आपातकाल के दौरान, उस दौरान भी ऐसी पत्र पत्रिकाएं थी जो सरकार से संघर्ष करती रही, सरकार के सामने घुटने नहीं टेकी। उसमें मैंने जो कहा, मीनू मसानी का फ्रीडम फर्स्ट एक अखबार था जिसने सरकार का मुकाबला किया, उनके सेंसरशिप को नहीं माना। लगभग 100 अखबारों से जो विज्ञापन का रेवेन्यू था विड्रॉ कर लिया गया। मुझे लगता है जब हम ऐसे बिल को ला रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक प्रतिबद्धता दिखाई है, न सिर्फ औपनिवेशिक कानून को समाप्त करने की, बल्कि ये देश को बता दिया। जिस प्रकार माखन लाल चतुर्वेदी जी, जिन्होंने पुष्प की अभिलाषा लिखी, सभापति महोदय, उस कविता को उन्होंने जेल के अंदर लिखा था और जेल के अंदर लिखने पर भी उन्हें सजा मिली थी। जो मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना फेंक, जिस पर पथ पर जाए वीर अनेक। इस कविता को माखनलाल चतुर्वेदी अपने जेल से लिखे थे। 63 बार उनके घर पर सर्च किया गया था स्वतंत्र औपनिवेशिक काल में। मैं कहता हूं ऐसे कानून को लाकर हम स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता के इतिहास में एक
मील स्तंभ स्थापित कर रहे हैं, एक प्रकाश स्तंभ स्थापित कर रहे हैं और देश को इस बात को, दुनिया को बता देना चाहते हैं कि जिस देश में 1.5 करोड़ पत्र पत्रिकाएं छपती हैं, जिस देश में विचारों की विविधता है, उस देश में विचारों की विविधता, स्वतंत्रता बनी रहेगी। पश्चिम जो भी पैरामीटर का उपयोग कर ले, उनके गार्डियन और न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकीय बोर्ड को मैं बता देना चाहता हूं कि भारत की प्रेस की स्वतंत्रता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस तरह से अक्षुण्ण है, दुनिया की कोई ताकत से बाधित नहीं कर सकती है। टेलीविजन हो या डिजिटल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, प्रेस की स्वतंत्रता पर हम अक्षुण्ण बने हुए हैं। इन स्वतंत्रता के बाद, इन स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए हम अमृतकाल में नए भारत का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको, धन्यवाद। प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। माननीय उपसभापति जी, चर्चा का जवाब। द प्रेस एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पीरियोडिकल बिल 2023, प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रेशन बिल 2023, प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रेशन विधेयक 2023 पर चर्चा करने वाले और चर्चा में भाग लेने वाले, सबसे पहले तो मैं सुलता देव जी, पवित्र जी, एस निरंजन रेड्डी जी, थम्बी दुराई जी, नरेश बंसल जी, विजय साई रेड्डी जी, जी के वासन जी, GVL नरसिम्हा राव जी, GVL नरसिम्हा जी, सीमा द्विवेदी जी, के रविंद्र कुमार जी, कार्तिकेय शर्मा जी और राकेश सिन्हा जी ने जो चर्चा में भाग लिया, अपने बहुमूल्य सुझाव दिए और समर्थन दिया, इस सब के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। आज़ादी का 75वां वर्ष, जब हम अमृत काल से स्वर्णिम काल की यात्रा की ओर चले हैं, तो हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो गुलामी की मानसिकता है, जो प्रधानमंत्री जी के पंच प्रण में बहुत विस्तार में कहा गया है कि विकसित भारत बनाना वो पहला प्रण है, लेकिन गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी है। उस गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने की दिशा में आज ये विधेयक लाया गया है और आप सब ने समर्थन किया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1867 में, 1867 में जब उस समय कानून लाया गया था, तो अंग्रेज भारत पर राज करते थे, हमें गुलाम बनाकर रखा था और मंशा ये थी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से कोई भी प्रेस चलनी हो, प्रेस हो या फिर पब्लिशर हो, उन सब के ऊपर एक कंट्रोल करके रखने के लिए कानून इस तरह से बनाया गया था। लेकिन आज राज करने के लिए नहीं, कर्तव्य निभाने की बात की जाती है। इसलिए उस दिशा में इस बिल को लाया गया है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसा मैंने कहा कि 3 मुख्य बिंदु इस बिल के हैं। पहला तो इस कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकल के आने के लिए, क्योंकि उस समय क्राउन ऑफ इंग्लैंड, उसके लिए क्राउन इन इंग्लैंड, उसके लिए काम किया जाता था। यहाँ तक कि यहाँ पे जो अखबारें, समाचार पत्र या पत्रिकाएं छपती थी, उसकी एक कॉपी उस समय इंग्लैंड भेजनी आवश्यक होती थी। तो हम उस समय से बाहर भी निकले हैं, आज़ाद भी हुए हैं। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि छोटे छोटे गलतियों पर भी उसको एक अपराध मानकर जेल में डाल दिया जाता था, दंड दिए जाते थे। डीक्रिमिनलाइज करने के लिए भी हमने उचित कदम उठाए हैं। अगर उस समय के बिल में 5 ऐसे प्रावधान थे जहां पर आपसे छोटी सी गलती भी हुई तो फाइन के साथ साथ आपको 6 महीने की जेल हो जाती थी, हमने इसको उस दिशा से मुक्त किया है। अब केवल एक ही केस में ऐसा होता है जहां पर अगर आपने बगैर अनुमति के प्रेस चलाई है, पत्रिका चलाई, पब्लिशर आप बने हो और आपने इन्फॉर्म नहीं किया है और आपको नोटिस दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर आप इसको बंद कीजिए। 6 महीने का बहुत पर्याप्त समय है। अगर आप